गुड। क्या हुआ, चौंक गए? पॉकेट 52 पे पहले डिपॉजिट पे जब मिलेगा 5600 तक का बोनस तो हर कोई चौंकेगा। इस गेम में वित्तीय जोखिम का तत्व शामिल है और इसकी लत लग सकती है। कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें। वर्क फ्रॉम होम इज नथिंग बट होम का सारा वर्क। और झाड़ू। अब जब भी होगा काम ओवर खेलूंगा मैं एमपीएल पे पोकर, क्योंकि यहाँ है कैश टेबल्स 24/7। जीतो ऑन इंडियाज लार्जेस्ट पोकर प्लेटफॉर्म। इस खेल में वित्तीय जोखिम शामिल है, इसकी आदत लग सकती है। कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें। This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly at your own risk. Participation according to state laws. A warm welcome to all you viewers who are tuning into this stream. This is a presentation of the final table of the 64-player MTT, which is the deep stack event of this Pocket 52 Poker Sports League Season 3 Virtual. I'm your commentator Sriram Chakravarti Sridhar, and with us always to give us his insights is JD Saz. JD, what's up, man? Good. And we did see a lot of the action, Shri, together. And then you took on solo, and we've reached the final table. So you have more stories to tell me than I have to tell you. Yeah, I think when we saw it, that initial part of that feature table, which we showed, which had 5 different captains on it, and was being dominated by. We even saw Puneet, the owners of Mumbai, busting 2 pros in a single shot itself. He busted Niharika Pindra and Raghav Bansal with his ace king. Raghav did flop a set of 10s, but he himself had flopped Broadway at the straight to the ace. Yeah, that held. That helped. And then Puneet himself then busted out after a while. Akshay Nasa, who dominated so much of that play for so long in the MTT and on the whole, also does not make this final table. The players, though, who do make the final table, JD, here is that list. We've got 2 players from the Chennai Troopers. Alok Birewar is one of them, who is the pro for the Chennai Troopers, and he is also got quite a decent stack. He's got a stack of 211,000, and the blinds are at 3,500, 7,000 as we start, JD. So Alok Birewar is in seat 1. He's one of 2 players from Chennai. Jai Kiran Kumar for the MPL going nuts. This is the story, JD. We have 3 players from the going nuts on this final table. He comes into this as the online qualifier for them. He's the shortest of the lot. He's got just over 10 bigs. Then we have from the MPL Mumbai Anchors, someone who was holding quite a good stack for most parts of play in this MTT, Hani Bijlani. He's played for them before as well, so he knows his way around these final stages of an event like this. So Hani Bijlani comes into it second in chips, JD. He's got a stack of 275,000. And in seat 4, the lone representative for the Deccan Aces. Remember, viewers, Deccan Aces right now in second place. They're only 900 points behind the Poker Dangal Kolkata Kings. So Neil Joshi is representing them in this one. He's 4th in chips. And नील के बारे में हमने बात थोड़ी बहुत करी थी जब वो स्टार्टिंग से ही उसका स्टैक ऊपर में आ ही रहा था. एंड मैं बोल भी रहा था इसने काफी देर से कुछ करा नहीं है तो होने वाला है. एंड लुक एट हिम, ही इज एट द फाइनल टेबल, हैज डिसेंट अमाउंट ऑफ चिप्स. 25 बिग ब्लाइंड है. एंड नील बीइंग अ टूर्नामेंट प्रो, 25 बिग ब्लाइंड तो काफी ज्यादा है. ही नेविगेट हिज वे अराउंड वेल, एंड आई एम कीपिंग एन आई ऑन हिम. देखते हैं आज मेरे लिए तो मेरे को देखना है नील कैसे खेलता है.
Right, he's the youngest of the lot as well, the 23-year-old. And then in seat 5, someone we saw from a couple of days ago. Yep. In seat number 5, we have Shrikant Narayan. Shrikant Narayan is the wildcard come coach of the Chennai team. We saw how he survived that day in the wildcard event. JD He was short for so long. He put on a masterclass in ICM play. So he's here. He's got about 106,000 in chips, about 15 bigs, you can say. So he's in seat 5. Seat 6 is the chip leader, the second of 3 players from the MPL going nuts. It's Siddharth Mundada. Siddharth Mundada, JD, after you left the stream, he was getting involved quite a bit. He was putting maximum pressure on in the bubble situation, which was basically when there were 11 players left, and he chipped up to 362,000 and some in chips. So he's the chip leader. Next in chips is Hani Bijlani with 275,000, like we mentioned. And we've been seeing a lot of Siddharth lately, JD. Yeah, he played the sit and go, the qualifier sit and go, and got pretty unlucky in one. Otherwise, he would have had 50% of the chips in play 5-handed, whereas Kings got cracked by ace-9 of Niharika. Niharika made quads. So I guess it's variance which is being neutralized for him. He's obviously, to run deep in a tournament, you need to win your flips. All those occasions happen in one particular tournament, but he's been showing consistent gameplay, which is above par than the rest he's been fighting out. So yeah, this showing had to come, and right now he's the chip leader, so he'll be dictating the terms for you guys. I mean, for the people sitting in. Right, and the sole representative for the Bengaluru Legends is in seat 7, comes in as a hashtag poker qualifier, making his debut in this particular league. It is Mohit Bora. So we saw a very little of Mohit Bora, JD, in that first week. And he comes into this with 80,000 in chips. He's second from the bottom in terms of stacks. He's going to be playing this as a shorty. He's got nothing to lose, and he's going to be going for it. You know, every pay jump he gets is going to be so crucial for the Bengaluru team. The good part is he's already in the points. He's already above the min points, and he's made his team some good enough of points. And now all he has to look up to is getting more of them. Right, so Mohit Bora in 7, and seat 8, the third and final player for the MPL going nuts. JD, you called it. Abhinav Iyer has made it to the final table. He comes into this also with about 15 bigs. A player like Abhinav Iyer, you know, everybody wants to see the back of him if you're sitting on that same table as soon as possible. Yeah, true that. And he's coming in with a 18 big blind stacks, still maneuverability, and there are 3 stacks which are shorter than him. He'll be more than happy for them to go out. But he'll still put on the 3-bet shove game, which I think he would have the most knowledge on this table with. He's accustomed to running deep in final tables, and once you get short, you don't count Abhinav out. He'll just put pressure on the chip leader as well with his 18 big blinds where the chip leader can raise but not call off. So should be interesting to see him in the mix with the rather shorter stack. He's accustomed to getting in there with the big stacks. So today we get to see his short stack game as well. Right, we do get to see it. So before we take you to that to the gameplay from this final table, we'll just give you a quick heads up on what the points are, the points distribution for the 8 players who remain in this MTT. Top place will get 4,800 points, and second place 3,300. Third place finisher 2,100. Fourth place 1,300. Fifth place 1,000. Sixth 900. Seventh 600, and eighth place will be 500 points. That's what's at stake here, JD. And the other thing which what was happening was when I joined the audio call of the guys who were going to play the sit and go. So Alok and Siddharth were having a banter of a time. They were
let's say, pulling each other's leg, and they both have chips. So the chips might do the talking as well in this one. I sense some rivalry in them, and it'll be much fun to watch it and see them battle it out on the table now. Yeah, it will be, because towards the final stages of the build up to this final table, JD, they got involved in a couple of spots together. Alok Pirewar actually held the chip lead in this MTT for a while. He had quite a chip lead, and then Siddharth took over the chip lead after busting out one or two players. So that dynamic is going to be really interesting to see, the one between Alok Pirewar of the Chennai team and Siddharth Mundada of the Goan team. Let's talk about the seat arrangement also, where Shrikant's a little handcuffed with the chip leader on his left, and so is Abhinav Iyer with Alok on his left, and then the shorty. Like, he cannot open on the chip leader, and then the tougher part is the shorty can shove as well. So Abhinav is maybe all right with his seat, but Shrikant definitely does not have a good seat with Neil on his right and Hani on his right as well, and then the chip leader on the left. So yeah. The shorties have nothing to lose. They have 10 big blinds. First mission is double up, and then think about the possibilities. So Mohit and Jaikiran should be just relaxing, waiting for their hand. Their coaches in the boot camp have already told them what shoving ranges are. What do you do with 10 big blinds, 11 big blinds, 15 big blinds? So they might be the least stressed people over here, because the more chips you have, the more you have to lose. Absolutely. You go out like someone who's one of the chip leaders coming in. If we've seen these things happen, man, like second in chips going out when there are 4 left and 3 get paid. So those interesting dynamics do come in. And soon enough, we'll be starting the game for you guys on the stream. And how did you find the solo commentary, Shri? Well, basically, I got into it. By the time you left, JD, it was pretty much many short stacks, and the feature table that we had, it just lit up with a lot of people going all in, because the hands played themselves out. There were a lot of spots where one person got cooler, some spots where both players had enough equity to get it all in. So it just went. All I wanted to hear was you missed me, but enough poker action for you. You're the action junkie, huh? So no miss me, but a lot of action, hands played out. Yeah, that's what happens when the shorter stacks come in and everyone wants to race to become the chip leader near the bubble. Yeah, and must have been good. Yeah, I thought maybe they'll tighten up when there was about 18 players, 20 players left. I thought, okay, maybe here's when it starts to slow down. But there was no real slowing down, and thank God it got over pretty quick, and we built this to this final table. Because whether I say it or not, JD, you must know that I really missed you in some spots there. There were some interesting spots. This final table, though, absolute pleasure that you're here with me, because there are going to be so many spots on this table that I may not understand as well, and the viewers won't understand as well. But you'll be here to break it down for everybody as we see the whole cards come out. Yeah, the whole cards are out there, and I'll plug into the players' audio as well. Let's hear what these guys are up to. Yeah, I want to know who's going to be the most talkative of this bunch. You said Siddharth and Alok already got into a bit of it, but to be... And we've already seen a Pocket 52 all in, and look at this ICM situation where Shrikant has a little more than the other 2 stacks. That's why he's thinking, otherwise his chips would have been in all already. He does make the call, needs to fade, and that he does. Queen high for Neil, no good against the ace high of Shrikant. Right, and it's a role reversal of sorts over there. Shrikant doubles up, and now Neil is the one who's pretty much gone to Shrikant's stack. Right, and a double up he does, and then gets aces. And an immediate call of nice hand from his teammate, who was obviously railing Shrikant in that particular Pocket 52 all-in situation. Right. Abhinav Iyer with the 6-3 suited. I see a shove hand somewhere. Would be interested if he goes with it or not. Abhinav taking his time. Yeah, Jaikiran definitely with a hand like King 10 suited.
The hijack, enough incentive for him to get it all in. Yep. I think he might be saved if Alok just decides to raise over there, and he might not consider enough fold equity with his hand, and especially 4 more people to act behind. But Alok quickly folds. So if Jaikiran wants to shove it, he'll be shoving into the aces right behind somewhere. He does, and Shrikant, who's just doubled up facing another pocket 52 all in, but this time round he has aces in his hand. So he's loving how the tournament final table has started for him. Needs to fade a lot of things over here after that flop. The inside straight draw and the flush draw does fade. And good game, Jaikiran. You came with a plan. You had to put your chips in. And if you ran against aces, that was a pretty good flop to flop. Yeah, what a fade by Shrikant Narayan. So we lose the first player of this final table. It is Jaikiran Kumar, the qualifier, the online qualifier, who makes his debut in this PSL. He goes out in 8th, and Shrikant Narayan, the beneficiary of quite a few chips in the early stages of this final table. Yeah, he's pretty much tripled up in 2 hands from where he started. He was close to 80k, 83, 84k, and now has 260k. We did see a glimpse of Abhinav, and I think he's having some issue over there because he's folded out as well. And now the action's gone around ahead. Alok Verwal, Honey, Neil, all these guys right behind. Right, so while Come on, Alok decides what to do, we just give you an update, viewers. If you have joined in, we've lost one player already, Jaikiran Kumar, and his King 10 suited after flopping a great set of cards. Decides to ultimately he's not catching one of those outs, and which means Shrikant Narayan's aces will help him get some more chips. So that's the latest update from this final table, and we see another pocket 52 all-in moment. Neil Joshi of the Deccan Aces. Yeah, did not want to run into a hand which would call him in the big blind against Shrikant, but looks like he's going to pick up some blinds and ante on this one at least. यहाँ पर तो कम से कम नील को चिप्स मिलेंगी. नील बोल रहा होगा, अरे यार बोलते हो कि मुझे खेलते देखना है, पहले ही हैंड में आधा स्टैक करवा देते हो. But yeah, good to see him picking up some chips. Right. Kunal would be happy with that, and unless Siddharth goes really against the blinds with his 7 deuce, Abhinav Iyer might get some more chips if Mohit decides to shove. Queen high, अच्छा खासा hand small blind पे, Bengaluru Legends shove. Abhinav Iyer, let's hope his internet comes back in time because he's got a huge hand. His opponent shove into him, and he's I think facing problems because last hand भी उनका ace 10 छूट गया था. So ये तो problem होने वाली है अभिनव को. Such a huge hand in such a big spot. If he wins the spot, he'll have close to 180k chips. But he's tanking, which means he's disconnected. Right, unfortunate. Pretty unfortunate for Goa Nuts, sahi baat. Very unfortunate. Very fortunate for the Bengaluru Legends and Mohit Bora. They're going to have a look at that in the stream sometime later. This is the kind of fortune you need, JD, sometimes in a final table that's so stacked. You know, your Queen 8 shove, your opponent times out with Ace King off, and who knows, you maybe go on to take it down. So Mohit Bora is still in it. He's got exactly 10 bigs. Some cowboys on screen. So, वो थोड़ी situation like I saw Abhinav in his video feed came in for a second, तो मुझे लगा कि he's back, but that was not the case. Honey Bijlani in the big blind has kings. बाकी किसी के हाथ में तो कुछ ऐसा दिख ही नहीं रहा है. And he's opened it up. I'm sorry, I thought he was the big blind, but he's opened it up. तब तो और कुछ नहीं. Alok Berwal has the suited hand. He might complete. मतलब 8000 और कॉल करना है. So let's see. Abhinav definitely facing some issues. We see his camera feed also going haywire.
Yeah, Looks we like have him in the mix now. yeah, we have in the mix, and he's gonna probably go see some of that footage at some point. Yeah, he's saying he's logging into the software. This hand is inconsequential for him, but the previous was a big one. Alok Birwal defends his 4-6 suited and not the flop he was looking for. तो ये हैंड भी खत्म होगा और जैसे एक बंदा बस्ट हो गया तो उसके बाद मोहित को भी थोड़ा साई ऑफ रिलीफ ही इज लाइक चलो एक और पॉइंट बम्प मिला और पहुंचे ऊपर एंड Neil is the only one who's substantially differentiated from the chips he had previously and मोहित को भी opportunity मिल गई है क्योंकि श्रीकांत जो इतने चिप्स जीत रहे थे फाइनली वेक्स अप विद एस जैक एंड मोहित के पास 10 बिग ब्लाइंड से कम है तो श्रीकांत इन मोस्ट लाइकलीहुड is going to raise call his shove. Right. So let's see if Mohit has some internet issues because he's gone off screen for a bit too. He's back. The time bar is running. He's back and he should be going in anytime soon. Is this the table curse? Whenever you get ace king, you get disconnected. Cannot be the case always. He shoves in Shrikant with ace jack going in the tank. Will sooner realize he's invested the 16,000 already. Makes the call. Needs to hit a jack right now in the river. Does not. And so the double up for Mohit coming in this pocket 52 all in. The double up for Mohit, which means he's no longer the shortest stack. And Shrikant losing some of those chips that he picked up earlier. इतनी जल्दी डायनामिक चेंज हो गया देखो वहाँ नील से श्रीकांत पे chips and then him picking aces when someone shoved into him. So the chips have been flying for sure and button पे ace आया है आलोक के पास he's definitely gonna be opening. नील बहुत short है jack दूस तो बहुत ही बेकार hand है big blind पे so he's just letting it go. सब लोगों की शक्लें देखो पोकर फेस देखो किसी को मतलब इमोशंस है ही नहीं अंदर अंदर तक इमोशंस नहीं दिख रहे. Everyone is so zoned in, dialed in, call it what you want. It's the business end of things, JD, in this league, and all team members aware of it. And Shrikant सिद्धार्थ मुंडाड़ा के साथ हैंड खेलने वाले हैं लग रहा है एंड सिर्फ कॉल करके आए हैं अंडर द गन ओपन किया अगेंस्ट चिप लीडर में ICM स्पॉट भी है आपसे छोटे स्टैक्स हैं अभिनव अय्यर और नील जोशी में तो यहाँ पर 3 बेट करके अगर आप 3 बेट तभी करें मोस्टली यहाँ पर कि अगर आपको लगता है आपका अंडर द गन ओपनर बहुत ज़्यादा वाइड ओपन कर रहा है एंड यू कैन गेट अ लॉट ऑफ फोल्ड्स या फिर यू आर 3 बेटिंग एंड गोइंग विद इट वेयर यू थिंक योर ओपोनेंट जस्ट वाइल्ड एंड स्टिल हाई वेरिएंस प्ले ही है वो अगर आपको करना है. ही डिसाइड्स जस्ट टू कॉल एंड फ्लॉप भी चेक गया टर्न भी सिद्धार्थ को के तरफ पहुंचा दिया श्रीकांत ने चेक करके. इंटरेस्टिंग बात यह है कि सिद्धार्थ यहाँ पर रिप्रेजेंट करना चाहते हैं क्या इस बोर्ड पे जो उनकी रेंज को इतना ज्यादा हिट नहीं करता है. डजंट इवन हैव अ हार्ट इन हिज हैंड. स्टिल बेट्स अ चंकी बेट लाइक 60-65%. चिप लीडर के बाद जब एक्स्ट्रा चिप्स है ना तो इतना डर नहीं लगता है वो बड़ी बैट मारने में. लाइक ऑल राइट व्हाटएवर 26,000 मार दूंगा पकड़ा गया तो पकड़ा गया. बट द प्रेशर्स ऑन श्रीकांत सो he got away with that. Slightly I wouldn't agree with a few things on that but when you're chip leader you're allowed to do things and they get away. तो अब नील के पास बटन पे तो एस है तो श्री we know this is going in. और बात ये है कि आपको लगता है कि सिद्धार्थ कॉल करेगा या नहीं. पॉकेट 52 ऑल इन मोमेंट तो आ गया है. अब सिद्धार्थ को ये सोचना है कि उन्हें ये कॉल करना है या वही अपनी चिप लीड पूरी सीमेंटेड रखनी है. उनको लगता है किंग 9 अच्छा करेगा उनके ओपोनेंट की शविंग रेंज के अगेंस्ट. he ends up deciding on a fold. Would have been definitely pretty close. Like king 10 तो मेरे हिसाब से maybe call king 10. चाहिए. Yeah, it was really like close. 10 big blinds थे तो yeah, really he probably close. just wants to be cementing himself really away from Alok Birwal and others from the stack. Honey Bijlani, he's like मैं हार जाऊंगा वो hand तो I'll be close to Honey. Yeah. Or might as well just stay the other way. And यहाँ श्रीकांत ने बटन ओपन किया and सिद्धार्थ जो हम जानते ही हैं थोड़ा aggressive खेलते हैं. He just shoves.
यहाँ पर full on pressure श्रीकांत के ऊपर, and does Srikanth want to call for his tournament life? If he would, he would be a huge favorite. But वही बात है कि अगर यहाँ पर पेयर्स के अगेंस्ट फ्लिप कर रहे हैं या डोमिनेटेड हैं तो would be a really tough spot. So श्रीकांत को सोचना तो पड़ेगा यहाँ. सोच के क्या लग रहा है, या ये भी टफ स्पॉट है, मतलब आपकी रेंज से बहुत अच्छा हैंड है एस 10 आपके पास, बटन पे आप कचरा खोलते हो और यहाँ एस 10 आ रखा है, एंड देन द चिप लीडर इज जस्ट लाइक आई एम ऑल इन. करें तो क्या करें, श्रीकांत बहुत कम टाइम बचा है, ये पॉकेट 52 ऑल इन मोमेंट, And he makes the correct call, does not get rewarded. Trip 9s for Siddharth Mundara on the turn. Brutal. So brutal. You just look at, you heard that comment from Alok, क्या luck box है Siddharth. So the banter will definitely go on between those two. And with that, Alok sees his teammate busting out. So brutal. You know, JD, like you said, that quite a good holding when you're on the button, and you know, it's at the same time it's so easy to fold that when you're in for your Tony life. And Srikanth Narayan making the absolute perfect call, only to get some bad news and worse on the turn. So with that, we lose Srikanth Narayan in 7th place. We're down to 6 players, and Siddharth Mundada with the outright chip lead, JD. He had a wild ride on this in this tournament, like came in short, almost like doubled up and then busted one guy, so essentially tripled up from where he started, doubled one guy, so now has like 150,000 and would have been close to the chip leader had he won that hand. So the emotions, roller coaster emotions he went through in that tournament final table. Yeah, so that's what happened in that previous hand. If you just joined us, ace 10 off for Srikanth Narayan of the Chennai team. He opened up the action from the button. The 3-bet jam from Siddharth Mundada in the small with ace 9 suited. Srikanth making the absolute perfect call, only to see his ace 10 being taken down by 2 9s on that board. And on we go. Abhinav Iyer is now the shortest of the lot, JD. This one swinging in all directions. Pocket 5 for Mohit, and he can find a fold here. He decides to open. Mohit comes with the raise. I actually don't like it. He's the middling stack. He'll have to play against the chip leader with a hand which is not going to flop well a lot of the times. Like the exact hand Siddharth has is the 5-7, and I still think he's going to win this hand more often than not, because Mohit wouldn't, if Siddharth ended up playing it. He just kept Mohit's range too tight from there and just let that go. But वही बात है कि Mundada has chips to just probe sometimes also and make his opponent fold a lot of the things. Yeah. So had he folded, I think it would have been Abhinav Iyer who might have gone in this Jack 10 suited and picked up some chips. लेकिन मोहित ने भी अपने लिए 2-2.5 big blind तो उठा ही ली. Yeah, and this because of his perceived hand strength from early position. Neil Joshi also letting go of pocket 7s in that spot, JD. Yeah. वही बात है, आप जो फर्स्ट पोजीशन पे खोलते हो उसके अगेंस्ट 7s कैसे खेलते हैं. It's so tough, and especially when he has only 11 big blinds of sorts. तो वहाँ पर सिर्फ उनको अगर 7s खेलने थे तो एक ही तरह से खेल सकते थे. Right, and this time Neil folding king jack off. Absolutely the right move, because under the gun is coming with the raise. Iyer not getting any hands at all. Alok picking up a few pots back to back. Ace 7 suited. And the comment, friendly table, he says when they let him pick the pots. Can't tell you. Can't defend. मोहित के पास यहाँ किंग डूस. Would be interesting if he raise. I don't think he should. He folds, and Abhinav Iyer with the 5-7 has to make it more friendly. Give it to his friend Alok. I clicked on check fold. At 7. Look at the needles Alok is giving. I clicked on check fold. He never clicked on check fold.
He has to put those in. And these guys have a long history. They've played with each other a lot. And Alok now with the legit hand, blind versus blind, coming with the limp against the guy who covers him. Jack 8. यहाँ पर देखते हैं आलोक कैसे और आगे जाना चाहते हैं. हनी तो जितना यहाँ पर कभी ना कहीं स्टैब उन्हें करना पड़ेगा. 7 हाई शोडाउन पे ले जाके जीत तो नहीं पाएंगे. Right. So check and they are more than happy to take this to showdown, are they? आलोक क्या चाह रहे हो कि कोई बेट करे थोड़ा सा तुम्हारे लिए? एस हाई है भाई, वैल्यू बेट कर लो. And finally he does and wins the pot. The pot indeed. It's so much friendly table for me because I play with these guys. Not only poker, I play like in a small group of poker players. We Alok Berwal and Neil. We play among us together each other and we banter each other every day in and out. So I'll be too friendly with Alok, I guess. आगे देखते हैं. Shri, we have to decide, man. Are the loyalties still in there with Bangalore and Mohit, or are we thinking of someone else? I'm going with Neil. I want him to double up somewhere or the other. Jack 6 suited fold किया वहाँ पर. He's watching Abhinav Iyer being the shortest stack, who wants to level up. Yeah, I'm still sticking with railing for the Bengaluru team. It would be a great story too if the hashtag poker qualifier Mohit Bora, ran real deep in this one. So And he can surely run deep when Alok opening 7-8 suited, and there are two major hands with the other two guys who have the most chips. Wow, Anni Bijlani with the ace king and Siddharth Mundara with the jacks. Okay. Alok Adventures, the tale of Alok Adventures is going to finish soon, and the real hands will be talking soon enough. Wow. So, and a 3-bet shove, and now look at Siddharth. The tension in his face. He's like, okay, Yeah, now that's he's gonna have to call half his stack essentially in a spot where he knows he's either against a hand like 9s, 10s, or in pretty bad spot. I don't think Honey ever has aces, kings over here, or queens for that matter. I don't think so. He should have played like the 3-bet shove. You need to realize your 5-card equity. That's what he's going for, and realize he does that pocket 52 all-in moment. That flip for Siddharth not working out, and Honey Bijlani, they've just swapped positions again. Honey Bijlani is the overwhelming chip leader now. overwhelming chip leader. A couple of hands here in the small and big situation. The big blind is Abhinav Iyer, and he's really short. Mohit's going to put max pressure on him. एक और पॉकेट 52 ऑल इन तो आने ही वाला है इस पोकर स्पोर्ट्स लीग में, एंड दोनों के पास बहुत बड़े हैंड अपनी पोजीशंस के लिए. एंड ऑल इन एंड अभिनव कॉल्स इट ऑफ. Aces are raining, and with that we lose Abhinav Iyer. GG यार. And Abhinav has been eliminated. It was unfortunate there. Mohit, who was in one spot shoving Queen 8 into his Ace King off, got that shove through only because Iyer had timed out, had some internet issues. Then Mohit's gone on to double up, and in the end knock Iyer out with a hand that Iyer would have definitely thought he had chances of doubling up with. So unfortunate, pretty brutal. So down to 5 players just like that. Yep, that is the case. Honey Bijlani turns the best hand. Alok का 5 pair था वहाँ पर, and now straight up value betting against Alok. 2 flush draws भी possible हैं, and that is why Alok is like, क्या करूँ मैं यहाँ पर out of position इस spot में. He doesn't even have the flop top pair. He has the flop second pair. बहुत जल्दी अब 5 लोग बचे हैं. 3 लोग तो श्री बहुत जल्दी निकल गए हैं यहाँ पर. Right. And जिस तरह दिख रहा है, a lot of big pots are being playing. Honey Bijlani probably doesn't, but Siddharth का out of position, मतलब इतना ज़्यादा उनके पास jacks थे वहाँ पर. He probably Right. shoves that as well.
Yeah, that is so. The one really big hand playing out there, which changes the chip lead in favor of the MPL Mumbai anchors. Hani Bijlani's got the lead. Siddharth Mundada losing it to him, and just like that, in a short space of time, we are down to 5 players. The player to bust out in 6th, Abhinav Iyer of the MPL going nuts. Pretty much a sick one for Iyer. That Ace King in the small. Gets it all into his big blind. He's short. Wakes up to pocket 8s, and Ace rolls out on the flop. So that's that. And we're going to take a short break here. We're going to see you on the other side of this break. JD is going to be here with us too. 5 players remain. This is the final table of the Deep Stack event. Don't go anywhere, guys. क्या हुआ, चौंक गए? पॉकेट 52 पे पहले डिपॉजिट पे जब मिलेगा 5600 तक का बोनस तो हर कोई चौंकेगा। इस गेम में वित्तीय जोखिम का तत्व शामिल है और इसकी लत लग सकती है। कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें। हेलो एंड वेलकम टू पॉकेट 52 पोकर स्पोर्ट्स लीग सीजन 3 के क्विक अपडेट्स। मैं हूं अर्जुन सिंह एंड इस बार जिस मैच के अपडेट्स के बारे में हम बात करने वाले हैं वहां पे देखा हमने फैंटास्टिक गेम प्ले। चलिए आपको बताते हैं कि ऑनलाइन क्वालिफायर्स कैटेगरी के मैच 2 में आखिर हुआ क्या। इस मैच में कुछ प्लेयर्स ने 2020 में ही पोकर खेलना शुरू किया है एंड दिल्ली जाज की रिटेन्ड प्लेयर निहारिका बिंद्रा को छोड़कर बाकी सभी प्लेयर्स के लिए ये सीजन इस लीग में उनके लिए पहला सीजन था। पर किसी के भी गेम प्ले को देख के ऐसा नहीं लगा कि ये फर्स्ट टाइमर्स है यहाँ पर। We see a flop needs a queen, a pocket 52 all-in moment. His range advantage on that board is so high. कोई flush draw भी available नहीं था. Good poker, pick up spots, and zone in. Was down to chipping 5. up for sure. Chipping up for sure. The most difficult of hands to play. So चलिए शुरू करते हैं 8th प्लेयर के साथ। डेक्कन एसेस के धीरेन्द्र कुमार का प्लेइंग स्टाइल रहा एब्सोल्युटली इंटरेस्टिंग, पर एक हैंड में जब उन्होंने अपने क्वीन 9 ऑफ के साथ खेलने की कोशिश की तो वो उनके लिए काफी भारी पड़ गया। उस हैंड में उन्होंने अपने काफी चिप्स खो दिए एंड बन गए इस टेबल के सबसे शॉर्ट स्टैक प्लेयर। उन्होंने स्पॉट्स देखकर अपने स्टैक को रीबिल्ड करने की कोशिश की, बट जब एस क्वीन ऑफ हैंड के साथ फ्लॉप में एस पैर बना लेने के बावजूद दिल्ली जाज की निहारिका बिंद्रा के 2 पैर के सामने उन्हें हार माननी पड़ी तो वो इस मैच से 8th प्लेस में आउट हो गए। एमपीएल मुंबई एंकर्स के मनीष मिगलानी ने एक पैसिव प्लेइंग स्टाइल रखा और काम रह के उन्होंने इस स्टाइल से अपने पॉकेट एसेस को लेकर एक हैंड में डेवलप भी किया, बट उनके पॉकेट 9s एमपीएल गो नट्स के सिद्धार्थ मुंडारा के स्ट्रेट के सामने कुछ नहीं कर पाए और इस मैच से वो 7th प्लेस पे आउट हो गए। इस मैच में एमपीएल गोवा नट्स के सिद्धार्थ मुंडारा शुरू से ही दिखे एक एग्रेसिव गेम प्ले मोड में, बट जहां उनके पॉकेट 5s के साथ वो सोच रहे थे कि वो अपने हैंड का कुछ वैल्यू एक्सट्रैक्ट करेंगे बोर्ड पे, उनका सामना हुआ दिल्ली जाज की निहारिका बिंद्रा से। निहारिका ने ट्रिपल अप कर लिया पर सिद्धार्थ ने खो दिए अपने सारे चिप्स और हो गए इस मैच से 6th प्लेस पे कंप्लीटली आउट। पोकर दंगल कोलकाता किंग्स के विनायक बजाज भी उस हैंड में काफी चिप्स हार चुके थे, जबकि शुरुआत से अब तक उन्होंने एक सॉलिड पोकर गेम खेला था और आखिर में उनके एस ड्यूस दिल्ली जाज की निहारिका बिंद्रा के क्वीन जैक ऑफ के सामने घुटने टेकते हुए नजर आए, जब निहारिका ने बोर्ड में बना लिए 2 पेयर्स और विनायक इस मैच में 5th आए। चेन्नई ट्रूपर्स के सागर पटनायक दिखे एक सॉलिड फॉर्म में अपने एग्रेसिव स्टाइल में खेलते हुए उन्होंने करेक्ट स्पॉट्स पर प्रेशर डालते हुए इनिशियली चिप लीड बना ली थी, पर आफ्टरवर्ड्स काफी वक्त तक उनके पास अच्छे कार्ड्स नहीं आए और वो ब्लाइंड आउट होते रहे और फाइनली जब उनके पास किंग क्वीन आए, बेंगलुरु लेजेंड्स के कमल नरूका के एस जैक के सामने वो चल नहीं सके एंड सागर हो गए 4th प्लेस में आउट।
थर्ड आई बेंगलुरु लेजेंड्स के कमल नरूका भी दिखे ग्रेट फॉर्म में। जब भी उन्होंने कोई हैंड खेला उन्होंने एग्रेसिव खेला और करेक्ट स्पॉट्स पर 3 बेट भी किया और इस स्ट्रेटेजी को अपनाते हुए कई बार मनीष मिगलानी को फोल्ड करवाया भी उन्होंने। और इस मैच में बबल करने के बाद जब वो अपने एस जैक के साथ ऑल इन गए, उनका सामना हुआ किसके साथ? एस क्वींस ऑफ द दिल्ली जाज निहारिका बिंद्रा। और अपने कार्ड्स के साथ कुछ ना बनाने के कारण वो इस मैच से थर्ड प्लेस पे आउट हुए, लेकिन अपने टीम के लिए लेके गए पूरे 1000 पॉइंट्स। इसके बाद जो हुआ इसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। हेड्स अप में एक तरफ थी दिल्ली जाज की निहारिका बिंद्रा अपने पहले 2 सीजन्स के एक्सपीरियंस के साथ, और दूसरी तरफ थी गुजरात फैल्कन्स की सिमरन मल्होत्रा जिन्होंने 2020 में ही ये स्पोर्ट खेलना सीखा है। सिमरन ने शुरू से ही पेशेंस दिखाया, वो अपने मोमेंट्स के लिए वेट करती रही और एक हाथ ऐसा आया जब उन्हें लगा वो इस मैच से निकलने वाली हैं, उनके पास थे पॉकेट ड्यूस और वो ऑल इन चली गई। हालत कुछ ऐसी थी कि उन्होंने अपने हेडसेट तक उतार दिए थे, पर इस हैंड में उनको मिल गया एक ट्रिपल अप और इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। हेड्स अप में भी निहारिका जैसी एक्सपीरियंस प्लेयर के सामने वो डटी रही। निहारिका के रेस पे वो री रेस करती रही। उन्होंने हेड्स अप को एक प्रो की तरह खेला और वो चिप लीडर बन गई थी। लेकिन निहारिका इस टेबल की सबसे एक्सपीरियंस प्लेयर थी। वो शुरू से ही एग्रेसिवली खेल रही थी और कई बार डबल अप कर रही थी प्लेयर्स को बस्ट करते हुए, और हेड्स अप में आके अपने एक्सपीरियंस का पूरा यूज करते हुए उन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी बदल दी। वो पोजीशन प्ले पर ध्यान देते हुए अपने हैंड्स खेल रही थी और फाइनली सिमरन के जैक 10 ने निहारिका के एस 10 के सामने हार मान ली। फाइनली सिमरन इस मैच Welcome back, ladies and gentlemen. This is the Deep Stack event final table. 8 players made it to the final table. 3 players have already been eliminated from this one. The players are Jaikiran Kumar in 8th, Shrikant Narayan in 7th, and Abhinav Iyer, the last to go, in 6th. And we are down to 5 players. JD, the chip lead, in the hands of Hani Bijlani of the MPL Mumbai Anchors after he took down a huge pot versus the then chip leader Siddharth Mundada of the Goan Nuts. And trust me, everyone on that table was rooting against Hani Bijlani because he was the stack in question for his life. So Right. if he loses that pot, he's out, and I think Abhinav Iyer also gets a pay bump over there. So yeah, that was the whole table just wanted Siddharth to get more chips. They were like, we'll worry about Siddharth later on, but we need the pay bump right now. But instead, Hani Bijlani becomes the chip leader, and Siddharth gets the same hand he gave the chip lead in jacks again. How to play those pocket jacks? सबको ही जानने की कोशिश. Yeah, such a close spot, right, JD, where you know he's not going to be jamming something like kings or aces. Nearly 30 bigs it was, 29 bigs and some. And like you said, if he's calling off and the opponent shows 10s or 9s, he's way ahead. And then if he shows something like ace queen or ace king, he knows he's It's really unlikely for him to have 10s and 9s also because he knows Siddharth is the one who's covering him behind. Yeah. So that was another, like ICM में वहाँ पर especially against एक जो फर्स्ट पोजीशन ओपन कर रहा है एंड फिर पीछे चिप लीडर बैठा हुआ है, हु के 2 लोग और बैठे हुए हैं जिनके पास हैंड्स आ सकते हैं. सो दैट डायनामिक वाज इन प्ले. It was actually 3 people behind him exactly. Yeah, Neil, Siddharth, and Mohit were there. Yeah, it's a tough And, one yeah. if you're Siddharth, right? With the jacks, like what do you do? Like that's the thing. Like you said, you are ahead of a hand like 9s, 10s, and then you're flipping. I guess I would have called. It's a pretty close one. I see. The question is the air that you have to range the initial opener also, which was Alok Berwal who opened 7-8, but he could have the banter keeps going on. Siddharth is asking ace-7 off open किया क्या, but ace-7 off तो अब मोहित के पास है big blind पे. And Alok had opened a king 10 offsuit and then folded to the shove, and power poker सीधे सबको all in बुलाते हुए Hani Bijlani with his 6s. And I think pretty good play. Yeah, that's the max pressure.
puts max pressure. No need for Mohit to go out of line right now. He's got the most in terms of pay jumps. He came into this as the second shortest stack. The shortest at the start of the final table has already busted in Jaikiran Kumar. And Mohit, you know, some sort of jump this. He's got 20 bigs. And there was a spot there, JD, where Iyer timed out with ace king off and Mohit shoved into him. And then ultimately getting Iyer's chips with himself again picking up ace king off. Here we go. Here we see another pocket 52 all in moment. And सिद्धार्थ ने सारी चिप्स उठा ली इसमें. उनके पास भी अब 30 बिग ब्लाइंड्स के आसपास हैं. एंड सब पे प्रेशर इसीलिए डल रहा है क्योंकि नील अभी 10 बिग ब्लाइंड के स्टैक के साथ बैठे हुए हैं. एंड if no one wants to bust right before Neil. अब मोहित के पास यहाँ 20 बिग्स हैं. चिप लीडर पे रेज करना पड़ेगा. इससे बढ़िया एक जो प्ले देख ही रहे हैं. Literally, if you run into such a huge hand that can call off, then so be it. But I would rather not do this on the chip leader. पर इनको मतलब इनके रेजेस को जो रिस्पेक्ट मिल रही है, चिप लीडर 10-4 सूटेड छोड़ दिया वहाँ पर इनके अगेंस्ट. एंड पहले भी देखा है अंडर द गन 5s ओपन किए थे. Yeah, and he's definitely getting a lot of respect for his races. He's playing his image perfectly. He opened 5s under the gun, folded to Neil, who had 7s that time, and Neil himself didn't have much of a stack. And this is max pressure right now by Hani Bijlani on Neil Joshi. That shove goes through. So Neil is the one who lost a big pot to start off this final table, JD. He lost a big pot to Shrikant. And since then, he's been in a spot, not picked up hands of any sort. He was the middling stack for a while. Now he's short. He's going to be hoping to pick up some sort of a hand because he's got that much more freedom to put his chips in, as we see. Yeah, he gets 3 more hands after this one. इस hand के बाद वो button, फिर hijack cut off, ये सब चीजें होंगी उनके लिए. तो 3 hand और हैं जो उसमें वो देख सकते हैं अपने 8-9 big blind all in करें. सिद्धार्थ मुंडाडा विद द 10-6 ऑफ बिग ब्लाइंड पे. मोहित तो अपने पैर सारे छोटे छोटे आ रहे हैं उनके पास रेज करके विदाउट. ये जो छोटे पैर होते हैं खेलने में दिक्कत होती है क्योंकि फ्लॉप्स में उनको दिक्कत ही नहीं हो रही है. 4s 5s 7s ओपन कर रहे हैं लोग, फ्लॉप ही नहीं देख रहे हैं आराम से. एंड नील को फाइनली एक हैंड आया बटन पे जो वो अपनी 8.6 बिग ब्लाइंड डाल सकते हैं. और ये पॉकेट 52 ऑल इन आता हुआ नील का. And picking up chips, he'll essentially pick up 20%, increase his stack by 20% right over here. Really nice to let that rip in and pick up the pot non-showdown. So the 5 players that remain, JD and the viewers, each of them from a different team. Yep, exactly. And यहाँ पर मैं हनी के एस किंग वाले हैंड के बारे में सोच रहा था. तो आई एम एक्चुअली नाउ कमिंग बैक टू इट. वहाँ पर शव करना या 3 bet करना वो बात था कि थोड़ी डिबेट हो रही थी कि 30 बिग ब्लाइंड डाल दिए. पर मे बी आई एम ऑन हनी साइड मोर नाउ. पहले थोड़ा और अलग सोच रहा था मैं. बट लुक एट दिस. सिद्धार्थ आए हैं अच्छे हैंड के साथ. नो वन हैज अ ह्यूज हैंड बिहाइंड हिम एक्सेप्ट मोहित विच इज मार्जिनल एस 5 ऑफ सूट. Unless he thinks सिद्धार्थ के अगेंस्ट ये 3 bet shove कर सकते हैं. I don't think he's coming in. Does have the ace-6. Is thinking would be a bad time to shove that ace-5 suited. Sorry, offsuit. And नील जोशी भी शॉर्ट स्टैक बैठे हुए हैं. तो मोहित क्या करेंगे अब? इमेज का कुछ फायदा हो ना हो, तो ओपोनेंट के पास तो अपना हैंड है. And he goes for the 3 bet. Siddharth, we've seen him play tricky with the kings and all those other hands. So does he want to play this as a flat or just put it in is the question. Siddharth is loving his life. पूरा poker face हमेशा की तरह. Tough decision है बहुत. सोच रहे हैं. Yeah, he can flat this. You are right, JD. Once he flats the pots at like 140,000, the SPR of the effective stack is going to be just about 1:1. He decides to go all in, which also works. He's more than happy. It's fine with so much ICM in play. He wants to put in his chips in with the best hand. As simple as that. As simple as that. मोहित अभी तक इतने टाइम से मेरे हिसाब से सेकेंडरी फाइनल टेबल में काफी सॉलिड खेले होंगे क्योंकि उनके ओपोनेंट्स वही इतने फोल्ड्स कर रहे हैं उनके अगेंस्ट. तो ही वाज लाइक अगर मोहित के पास यहाँ एस किंग एस क्वीन है, आई डोंट वांट टू लेट हिम फोल्ड दैट.
Let's just put it in and hope his opponent has 10 jacks, queens, kings, any hand for that matter, which he can call off. That not going Siddharth's way. Still picks up close to 100k without showdown, 60k which came from Mohit or blinds or antis और ये सब और चीजें. So yeah, things are looking good again for Siddharth. थोड़ी और chips उठाते हुए. Big blind पे तो ऐसा कुछ hand आया नहीं है. Siddharth giving look at the expression 8 deuce off है सिद्धार्थ के पास तभी वैसे ही बैठे हैं हाथ रख के aces है तभी भी वैसे ही उछल कैसे नहीं रहे अंदर अंदर तो रहे होंगे पर बाहर इमोशन कंट्रोल करने आ गए इतना पोकर खेले हैं काफी इंडिया में टाइटल्स जीते हैं तो ऑब्वियसली वो केस तो होगा ही एंड ब्लाइंड वर्सेस ब्लाइंड सिद्धार्थ के पास डोमिनेटिंग एस द एस 10 अगेंस्ट मोहित एस 5 मोहित भी अब शॉर्ट हो ही जा रहे हैं 15 बिग ब्लाइंड उनके पास बची है तो ये थोड़ा टफ स्पॉट होने वाला है यहाँ पर कि कॉल ऑफ हो या नो तो यहाँ सिद्धार्थ ने ऑल इन किया एंड मोहित कॉल्स ऑफ नीड्स अ 5 or a 9 to chop or something like that doesn't get it and Siddharth Mundada Neil with this pocket 52 all in gets a play with points right Siddharth Mundada with 10 bigs 4 ladders मैं तो वही करता हूँ look at Neil saying मैं तो वही करता हूँ final table पे ladder and look at this button पे king jack open किया and Alok Berwal पॉकेट किंग्स के साथ बैठे हैं बहुत बड़ा हैंड इस पोजीशन में एंड ही हैज नो अदर प्ले जस्ट टू शव तो बात यह आएगी कि सिद्धार्थ यहाँ अपने दोस्त को बाहर करना चाहते हैं ओपोनेंट्स हैं टेबल पे फॉर श्योर एंड बैंटर भी इन दोनों के बीच में चलती है कहानी भी बनेगी तेरे को तो मैंने ही निकाला था फाइनल टेबल से बट इफ ही डज डिसाइड टू कॉल ही विल बी इन अ रियली रफ स्पॉट सिद्धार्थ किंग जैक अलाइव भी नहीं है सिद्धार्थ को स्ट्रेचिंग रेचिंग हंस रहे हैं तो कुछ बोल रहे हैं क्या Alok's giving us a sly smile सिद्धार्थ स्पीच प्ले कर दिया तो आलोक ने ना नील बोलते हुए स्पीच प्ले कर दिया आलोक ने और आलोक आखिरी में बोलते हैं निट का मतलब जो टाइट खेलता है पोकर में पर आलोक चाहते थे वहां पर कॉल right and Siddharth will go back and see the stream and be very happy he didn't call off there and with the short stack is still Neil Joshi he's going to let this one pile in any moment now इस पॉकेट 50 पोकर स्पोर्ट्स लीग सीजन 3 वर्चुअल में सारे ऑल इन्स आए जा रहे हैं No one wants to bust you, Neil. जैसे आलोक बोल रहे हैं नो वन वांट्स टू बस्ट नील नाइस यंग फेलो नो वन वांट्स टू लेट हिम गो मत मानिए इनकी बात ऐसा नहीं है एवरीवन वांट्स टू सी नील आउट ऑफ एयर गेट अनदर पे बम गेट टू द फाइनल 3 एंड देन प्ले इट आउट काफी चिप्स हैं अब तो देखिए सिद्धार्थ और हनी के पास 60 बिग ब्लाइंड्स के साथ बैठे हैं हनी कमांडिंग सिचुएशन में सिद्धार्थ भी काफी चिप्स वापस ले चुके हैं एंड 2-7 पे आलोक बेरवाल को वॉक Thanks, bro. Thanks, he says. If you just tuned in, the player to go out in 5th position for the Bengaluru Legends and taking for them 1,000 points, Mohit Bora. Mohit played great to hang around and hang in there. He was very short coming into this final table. Unfortunately, it was not to be. This was where it ended for him. Nonetheless, crucial points for the Bengaluru Legends. एंड यहाँ पर मुझे ऑल इन और कॉल दिखते हुए आ रही है क्योंकि फोर्स नील के पास ब्लाइंड वर्सेस ब्लाइंड में अगेंस्ट शिफ्टी राइनो फोर्स डोंट प्ले रियली वेल बट तभी भी कॉल यहाँ पर है फ्लॉप्स सेट ओपोनेंट 2 पेयर लगाए ना लगाए कोई फर्क नहीं गेट्स हिज क्रूशियल डबल अप रन आउट जब आखिरी तक हनी ने देखा होगा तो उन्हें लगा होगा 2 पेयर लग गए हैं मेरे जीत ही रहा हूँ मैं ये पॉट लेकिन नील जेम्स बॉन्ड की तरह आखिरी में दिखाते हुए लो मेरा तो सेट है Yeah, so yeah, that's the thing, you know, when these players do go to showdown, JD, they don't know their hands immediately when they've gone all in. They only see it after the chip slide one way or the other, or if it's a chop pot. So in this particular one, with the 7 and the 8 on the board, Ani would have thought he's good with 7-8.
However, Neil able to double up there. Crucial one for him. He stays alive, and Alok is now the shortest stack. हाँ, वही इम्पोर्टेंट है कि अब नील शॉर्टेस्ट नहीं है, तो अब ये ओपोनेंट्स कैसे खेलेंगे. अब आलोक की देखिए यहाँ पर पहली पोजीशन में रेस करके आए थे और इस फ्लॉप पे बेट भी कर रहे हैं. सिद्धार्थ हैज द बैकडोर फ्लश ड्रॉ. एसआई भी है, अपने दोस्त को यहाँ अकेला नहीं छोड़ेंगे. मेक्स द कॉल, टर्न्स द गटर. लूज से उनका स्ट्रेट बनेगा. आलोक को थोड़ा तो डर लग रहा होगा इस बोर्ड पे. बिग ब्लाइंड ने बहुत अच्छी प्राइस पे कॉल किया था, फ्लॉप चेक कॉल कर रहा है. अब आलोक का स्टैक टू पॉट रेशियो भी इतना अच्छा तो नहीं रह गया है. ही हैज only 135k chips behind, decides to check, and Siddharth finally makes his top pair. मेरे हिसाब से चेक करके आलोक को थोड़ा ब्लफ करने की सिचुएशन देंगे. एंड आलोक के पास कभी कभी यहाँ पर उससे बड़े एसेस होंगे, एस क्वीन, एस 10, एस किंग, तो ही वांट्स टू लूज द मिनिमम एज वेल इन दिस स्पॉट. देखते हैं आलोक यहाँ पर क्या करते हैं. इज देयर अ बेट साइज विच मेक्स सिद्धार्थ फोल्ड? वो बात आएगी. आलोक को ये हैंड ब्लफ तो करना पड़ेगा जीतने के लिए. एंड मुझे लग रहा है सिर्फ एक साइजिंग है जिससे चांस है कि शायद सिद्धार्थ फोल्ड कर दे, जो है ऑल इन. बाकी चीजों के लिए सही लग रहा है. He decides to check. He decides to check. You are right, JD. The only sizing there which might have got a fold. अभी नहीं भरेगा तो कब भरेगा? Look at that comment. Siddharth is like, अभी नहीं भरेगा तो कब भरेगा? Backdoor flush draw, backdoor straight draw, over card. तेरे रेंज के सामने ये देखिए दोनों की आलोक की मेडिसिन आलोक को दी जा रही है यहाँ पर. Yeah, and Siddharth was waiting for that, JD. I don't think he might have folded there. I think he was going into that with the intention of check calling. And nice check by Siddharth. Alok Piriwar checking back to save himself a lot of trouble. And देखो नील को थोड़ी सी चिप्स दी, अब घुस गया है अंदर and has almost double the stack of Alok. You don't count him out. You don't count the Deccan aces peeps out. Yeah, never count the aces out. They've they've shown that they pretty much are one of the most consistent teams in this league in previous years too. ये इंटरेस्टिंग हैंड होने वाला है मेरे हिसाब से यहाँ पर. क्यों? क्योंकि 3x रेज करके आए हैं हनी. नील इज इन पोजीशन, हैज द किंग 8 सूटेड, डिफेंड्स एंड टॉप पेयर वर्सेस 2 ओवर कार्ड्स एंड अ फ्लश ड्रॉ. हमें पता है दूसरा किंग लाइव नहीं है, पर जिस यहाँ पर एक्शन चल रहा है मुझे लगता नहीं है कि इस फ्लॉप से बात जरूरत भी पड़ेगी. अगर आईसीएम थोड़ा चीज होगी कि आलोक को ये ले वो या नील यहाँ पर कभी कभी कॉल करेंगे, बट आई थिंक हिज हैंड इज जस्ट टू बिग टू जस्ट कॉल एंड नॉट रियलाइज हिज इक्विटी फॉर द टर्न एंड रिवर. 33,000 बेट किया है हनी ने. नील डिसाइडिंग हाउ ही वांट्स टू प्ले इट. व्हाटएवर नील डज, आई विल एग्री विद दैट. यहाँ पर आईसीएम भी इन प्ले है, बट या टू बिग अ हैंड गोज विद इट. एंड हनी बिजलानी कॉल्स, नीड अ 9 और अ क्लब, does not get any of it. And Neil, huge hand, blind versus blind for both of them. Top pair versus flush draw, and with that we lose Neil, and Honey is the overwhelming chip leader after that pocket 52 all in. Shri. Yeah, just a huge moment there. Was like you said, JD, Neil Joshi, once he gets in, and hang on before I can say anything. और yeah, हार्ट चाहिए आलोक को जीतने के लिए या 10 कुछ नहीं. The all-ins, pocket 52 all-ins are coming, and the way it was looking all the while, Hani Bijlani is up with Siddharth Mundada. Yeah, that's it. Just like that, we're down to heads up. If you just tuned in, some quick succession of bust outs in fourth. We lose Neil Joshi, who got it in, like you said, JD. Too big a hand and too much of a spot to not not get it in with that much equity. He got it in with his king 8 suited on a pretty draw heavy board. Ani Bijlani took him down to eliminate him in fourth. And then immediately next hand, Alok Piriwar, who was short, piled it in with king 10 off, only to see the chip leader wake up to ace king off. And Alok Piriwar leaves us in third place. Nonetheless, he will pick up 2,100 points for the Chennai Troopers, and it's heads up between the MPL Going Nuts and the MPL Mumbai Anchors.
दोनों एमपीएल की टीम खेल रही है एक दूसरे के अगेंस्ट एंड काफी डीप स्टैक हेड्स अप है। देखिए ब्लाइंड्स जिसके हिसाब से है, शॉर्ट स्टैक को शॉर्ट स्टैक भी नहीं बोल सकते हैं। यहाँ अभी ब्लाइंड्स देखते हैं एक सेकेंड में। आधा मिलियन चिप्स, 5 लाख चिप्स हैं सिद्धार्थ मंदाड़ा के पास और बिग ब्लाइंड सिर्फ 11,000। सो क्लोज टू 4 बिग ब्लाइंड्स डीप हेड्स अप, जो टूर्नामेंट पोकर में काफी कम देखने को मिलता है। दिस कैन टेक अ वाइल। हमें जल्दी जल्दी बस्ट आउट तो दिख गए 4th और 3rd के, लेकिन जैसे ही वो होता है तो हेड्स अप वालों के पास बहुत सारी चिप्स हैं एंड ये गेम थोड़ा लंबा जाने वाला है। एंड हनी ने, जिन्होंने अभी तक मुंह नहीं खोला है बिल्कुल भी, मेड हिज चिप्स डू ऑल द टॉकिंग। तो आई थिंक दैट इज द वे हाउ इट्स गोना गो एंड पोकर अब देखने को मिलेगा दोनों हेड्स अप कैसे खेलते हैं। हनी डीप स्टैक में 3x ओपन करके खेल रहे हैं सिद्धार्थ के अगेंस्ट। पूरा अपना बटन को बड़े पॉट्स खेलना चाहते हैं यहाँ पर एंड सिद्धार्थ थोड़ा देर में रियलाइज करेंगे कि कुछ हैंड्स को उनको 3-bet करना शुरू करना चाहिए। और हमने देखा ही है सिद्धार्थ को इन द हेड्स अप गेम अगेंस्ट अभिषेक गोविंदी, जब फाइनल में 6-4 सूटेड तक 3-bet करते हैं तो समझ रहे हैं कि हेड्स अप ये भी बहुत खेले हैं, हेड्स अप का फाइनल जीते हैं, तो काफी एक्सपीरियंस इन्हें हेड्स अप का है ही इस पॉकेट 52 पोकर स्पोर्ट्स लीग में ही डायरेक्टली। और जब टूर्नामेंट आप पहुंचते हैं हेड्स अप तो खेलना ही पड़ेगा जीतने के लिए। Yeah, very crucial point mentioned by you, JD. Siddharth has been playing heads up. He won his heads up series versus Goindi. And Hani Bijlani, someone who's played for the Mumbai team all through, through the existence of the PSL in season 1, season 2, and he's back in season 3. And he's someone, like you mentioned, JD, doesn't say much, just goes about his business. So he's put them in a perfect place to take out maximum points from this particular battle. It's going to be interesting to say the least. Yep, that is for sure. And इन लोगों के बीच में गेम काफी लंबा चलने वाला है। मुझे फिर से वेस्ट कोस्ट का गेम ही हो गया है। बॉम्बे और गोवा की टीम्स खेल रही हैं, बाकी इंडिया देख रहा है अपने घरों से। एंड दोनों एमपीएल की ही टीम्स हैं इस पॉकेट 52 पोकर स्पोर्ट्स लीग में। Right, and both teams in dire need of points. Goa at the wrong end, absolute wrong end of the table. And Mumbai also, after getting off to a decent start in the first week, not really taking off from there. So it would be great for both teams. तो इस हैंड पे आते हैं। हनी ने he decided to limp this and सिद्धार्थ raised. He limped call ace-5. I would just prefer, आप जब इतनी देर से रेज कर ही रहे हो तो मतलब ये अचानक से आप लिम्स पे क्यों आ गए। हनी now Siddharth checks to him on this board. Still has the 2 overcards backdoor. So to be honest, itne deep I don't see him folding over here. He decides to call, turns an ace, which is good for Siddharth's range, but Honey connect हुए हैं वहाँ पर and he checks back his ace. यहाँ पर थोड़ा bluffing candidate सिद्धार्थ के लिए पहुँचा है hand. He's definitely has hands like king, ace king, ace queen because he's blocking both of them. He doesn't bluff at it, saves himself some chips in one way. एंड हनी अब इतना देर से चेक चले हैं तो उन्हें अब अपना एस वैल्यू बेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ट्राई कर रहे हैं कि हैंड लाइक क्या है मेरे सिद्धार्थ के पास ज़्यादा, मेरे हिसाब से तो इतने ज़्यादा हैंड्स नहीं है। कभी ओवर पेयर भी मुश्किल ही है। किंग क्वीन हाई से कॉल मिल गया लेकिन उन्हें, क्योंकि वो अपने ओपोनेंट को रख रहे हैं 7-8 टाइप ऑफ हैंड्स पे। तो Honey gets a huge amount of value against his opponent. काफी बड़ा भी bet किए थे river पे. So that was a really interesting hand. A huge hand, JD. And Honey realizing max value with that one after checking back on the turn. Some legitimate hands here. Ace-4 off for Siddharth. Decides to come in with a raise and fold to Honey's 3-bet jam. Yeah, so Siddharth himself is only thinking कि मेरे opponent के पास यहाँ middling cards हैं 7-8 या 8-9 and he's going for that sizing as a bluff. पर इतनी जल्दी यहाँ पर chips Honey की तरफ जाते हुए and Honey's opening and he's flopping well as well. Look at that, he's flopped top pair and ace-high Siddharth, which he did not decide to go all in pre. 33% pot bet कर रहे हैं Honey. काफी
जल्दी भी कॉल किया था सिद्धार्थ ने वहाँ किंग क्वीन हाई से. थोड़ा like I understand his thought process. It's just the way he snap called over there with king queen high. I understand he's thinking मेरे opponent के पास 7 8 8 9 है, पर थोड़ा सा टाइम. एंड मुझे तो ऐसे खुद लगा कि सिद्धार्थ is going to bluff the river with his king queen high. He's blocking ace queen and ace king, but he instead decided to check call. We've not seen Honey bluff much in this final table, to be really honest. All he's done is shove from blind versus blind with his shoving range, which is should be pretty standard. So ऐसा अभी तक मुझे दिखा तो नहीं था, पर यही लोग हैं जो एक दूसरे के साथ खेले हैं अभी तक इस सेकेंडरी फाइनल टेबल में, और पहले जहाँ डायनामिक्स अलग रहे होंगे. सो मे बी दीज गाइज हैव हिस्ट्री. इंडियन टूर्नामेंट्स में साथ में खेलते होंगे हर दिन, तो इनकी हिस्ट्री हो ही सकती है, ऐसी कोई बड़ी बात है नहीं. Right, and just like that, Hani Bijlani's taken a 4-1 chip lead. This particular hand, though, will Buttons have disappeared. more often than not go towards Siddharth. Like nothing showing up. I don't know how to. Oh, सिद्धार्थ को थोड़ा इशू आ रहा है सामने, and this is the wrong time for that to happen. Yeah, it's absolutely the I'll wrong just time. try to contact the production team. He doesn't have a choice to take an action, is what he's saying. He's flop trips. And guess what? Honey's got a piece of this board too, JD. He's got that 4. I just hope, just for the sportsmanship, Honey just checks it down. He has a pair. He's going to win it most of the times. But if he bets and then Siddharth times out, that will be not the best. So yeah, he's tanking for him as well. So hopefully we get Siddharth back soon enough. Right, so Hani Bijlani, understanding. Ooh, does he bet? He's bet. The thing is, I think he would have played this hand this way itself. If they were actually playing, he wants to protect his 4. But Siddharth's disconnected and he's let him know. देखते हैं यहाँ सिद्धार्थ वापस आए क्या? Has the trips. He's back. And he's back and back with a check raise. लो तुम मेरे लिए इंतजार नहीं करोगे तो check raise खाओ. Yeah, he's back. And check raise is also small. Honey calls with his 4 pair. Turn पे 5 आया, doesn't change anything for anyone. सिद्धार्थ लिटरली अब स्टैक साइज ऐसा करना चाहते हैं कि रिवर तक वो ऑल इन जा पाए. तो आई एम गेसिंग वी आर गोइंग टू सी समवेयर अराउंड, अगर 50 करते हैं तो रिवर तक ऑल इन जा सकते हैं शायद. हाँ, तो 47,000 ही इज गोइंग टू बी बैटिंग. एंड अगर हनी डिसाइड्स टू कॉल, ही विल हैव अ स्टैक टू पॉट रेशियो ऑफ 1:1. Honey's He gone instead puts all it in and Siddharth snap calls. Obviously, he has the trips. And Honey just putting Siddharth on an outright bluff of sorts and just shoving the 4. And Siddharth is just back in the game now. Back in the game. He was giving up a 1-4 chip lead. Hani Bijlani in that particular hand. A surprising jam there, JD. Very, very interesting couple of hands these guys have played out, JD, in this heads-up battle. One where Siddharth decided to call off pretty quick in response to a huge bet with King High. This particular one, after getting check raised on a King 4 board, Hani just not buying Siddharth's story and going all in and paying Siddharth off completely. तो सिद्धार्थ को जो डबल अप चाहिए था, चलिए वो तो मिल गया. एंड अभी भी देखिए 40 बिग ब्लाइंड्स डीप खेल रहे हैं दोनों के दोनों. बड़े पॉट्स खेलने में किसी को प्रॉब्लम नहीं लग रही है जिस तरह मैंने देखा है. Yeah, these guys are not afraid. These guys are not afraid. I've seen Honey play before too. He plays fearless. And Siddharth, from what I've seen of him in this particular league, he loves to get involved in it too. Loves to come in with his own raises and bluffs and jams. So this is going to be action-packed heads up for sure, JD. Yeah, man, especially when Siddharth's flopping bottom set where his opponent has bottom pair as well as the backdoor flush draw. Action is going to be starting with the in position Honey betting. सिद्धार्थ पहले भी चेक रेज दिखा चुके हैं ऐसे स्पॉट्स में.
And is he gonna go for the check raise again, or just gonna slow play his hand is the question. Limped pot है, तो इतने ज़्यादा मेरे हिसाब से बड़े kings नहीं है हनी के पास. Can have flush draws definitely. You're blocking a flush draw though. तो यहाँ पर check raise किए and let's Honey go little quickly. Right, Honey Bijlani पॉट वही है, सिद्धार्थ आउट ऑफ पोजीशन खेल रहे हैं तो पॉट बनाना चाहते हैं थोड़ा बड़ा. wants to be the dictator for that pot and not let his opponent decide कितना उस pot में chips जाने वाली हैं. And these guys are battling it out. दोनों के legit hand अभी queen 7 suited और 10 7 suited. Heads up में तो कोई भी दो suited cards are good. Honey ने top pair भी लगा लिया. So he checks, hoping for a bet from his opponent. Does Honey Bijlani? He gets exactly that. Let's see what he decides to do. He's coming with a check raise now. Mm-hmm. The problem with essentially this check raise with his exact hand is I wouldn't mind if this was like he at least had a bigger, like you probably want to check raise your bigger queens, like bigger kicker queens. And यहाँ पर आप awkward spot पे आ जाते हो अगर आपका opponent आपको वहाँ और like re-raise कर देता है, like your kicker is no good, you have the backdoor diamonds. Same issue. तो आप वो equity lose कर रहे हो against a hand like king queen I'll ace just queen have which to is never gonna fold anyway, or two pairs or whatever the position is. So It's here. especially deep stack, short stack में I would have been like अगर आपके पास 15 big blind है, हाँ check raise get it in, कोई दिक्कत नहीं है. Right. So on we go. Still very difficult to call who will come out on top in this one with these particular stacks, JD. And 5 high versus 6 high चल रहा है अभी तो ऐसे लग रहा है. And 5 high says I want it, I think I have 80% of a straight and needs the ocean to make the hand, but wins it without showdown. The legit battle, Shri. 5-6 of spades versus the red deuces. Legit battle. Exactly. Legit battle indeed. Let's see how he decides to play. He decides to just flat and a board which would not, which he would not be too happy to see. Let's see how Siddharth decides to play this. सिद्धार्थ को इस बोर्ड पे कभी बड़ा बेट करने की जरूरत ही नहीं है. प्री फ्लॉप ऐसा एक्शन हुआ ही नहीं है कि इस बोर्ड पे कनेक्शंस ज्यादा हों. And with his hand, the small little bet, making the under pair fold and winning the pot. आपको इस Pocket 52 Poker Sports League Season 3 वर्चुअल की इस डीप स्टैक टॉर्नी में अगर मैं बोलूं खेलने का मौका मिलता तो आप स्टार्टिंग में ही रजिस्टर कर लेते या जब आधी फील्ड बस्ट हो जाती, अगर आपको मौका दिया जाता. हम जानते हैं यहाँ पर स्टार्टिंग से सबको खेलना पड़ता है, पर डीप स्टैक में तभी भी आप जब 40 लोग बचे होंगे तभी भी आपके 30-40 बिग ब्लाइंड का स्टैक आपके पास तभी भी मिलेगा. तो आप इस स्पॉट में क्या करते श्री? स्टार्टिंग से ही बैठते इन लोगों के साथ खेलने में या 30-40 बिग ब्लाइंड्स अपनी कंफर्टेबल रेंज उसके साथ खेलने में शुरू करते? Yeah, I think I would sit when if there was a late registration option. 30 bigs, 40 bigs. Yeah, I think so too, JD. आप अपने को ज्यादा 200 बिग ब्लाइंड के स्पॉट्स इतने ज्यादा खेलने को समझ में आए ना आए, इसलिए आराम से 30-40 बिग ब्लाइंड्स कंफर्टेबल रेंज में where you know like this is also assuming that everybody can register only once. Yeah. If everyone's capable of late reg, then I don't think I'll be in for that late reg scene. This is assuming everybody has only one chance at it. And hey, the commentators get the edge, man. They can come in later when they've done the first few commentary sessions. Yeah, so, actually, man, we should be allowed twice the number of registrations that the rest of the players have been allowed. Right, and at the end, they'll say, "Here are the points for you." What are we gonna do with points? But the team needs point, and we know the team leading right now is Kolkata Kings, and second after them is the Deccan Aces. गोवा और मुंबई दोनों को पॉइंट्स काफी चाहिए. गोवा के 3 प्लेयर इस फाइनल टेबल पे आए थे, so they've had a good showing and would definitely want Siddharth to get the title as well. Right. Honey with an overcard and some backdoor flush equity.
प्री फ्लॉप ये सिंगल रेस स्पॉट आया है तो यहाँ पर फ्लॉप पे नहीं छोड़ेंगे, बहुत सारी इक्विटी है, थोड़ी इक्विटी देखिए टर्न डूस से उठाई है, लेकिन अगर वो रिवर पे एस लगाया तो थोड़ा महंगा पड़ सकता है। 4 अगर लगा के अपने ओपोनेंट के 2 पैर लग गए उनके तो उनके पास जरूर स्ट्रेट बनेगा। साइड्स टू चेक अगेन, सिद्धार्थ डबल बैरल कर सकते हैं यहाँ पर, इक्विटी उनकी भी बड़ी है, ओपोनेंट ने सिर्फ चेक कॉल किया है फ्लॉप, can have withdrawals over there, a lot of things. He decides to check back and river 10 जो तभी पॉसिबल है ओपोनेंट के पास जब उसके पास 10 के साथ फ्लश ड्रॉ हो या ऐसी कोई चीजें हो। So that's the situation and Honey has ace size, थोड़ा showdown तो है, but he's just going for the pot size bluff outright over here, trying to make his opponent fold hands like a 5 which Siddharth actually has or a 3. 9 को फोल्ड करना यहाँ थोड़ा एम्बिशियस हो जाएगा कि उम्मीद करे कि 9 फोल्ड करे। सिद्धार्थ बोल रहे हैं 9 क्या, मैं तो 5 भी नहीं फोल्ड करूंगा विदाउट अ किकर। सिद्धार्थ हैज द लोएस्ट किकर। Right, great call by Siddharth. He's nearly completely narrowed down the chip lead which Honey had. It at one point it was a 1:4 chip lead that he was giving up. And here we go, JD. We're back, even Stevens almost. Siddharth facing a few issues and still fighting it out and almost even in chips, making the good call over there. सिद्धार्थ के इंटरनेट में थोड़ा इशू है लग रहा है, but he's still playing it and making those good hero calls. तो यहाँ पर पहुंचे हैं रिवर पे। क्वीन हाई स्टिल गुड फॉर हनी एंड पोजीशन में है वो, तो यहाँ पर चेक डाउन होना ज़्यादा पॉसिबल है। विंस इट विद क्वीन हाई। It with queen high, and the blinds are right now at 6,000, 12,000. Next level 7 and 14, and still deep. You know, even at the next level, JD, like you said, they're still going to be quite deep. हाँ काफी डीप है। एंड यहाँ आप सिद्धार्थ के बारे में एक चीज पकड़ सकते हैं कि सिद्धार्थ हैंड्स खेलना चाह रहे हैं बटन पे। देखिए 4-3 ऑफ सूट नहीं फोल्ड कर रहे हैं, मेरे हिसाब से हनी बिजलानी थोड़ा ओवर फोल्ड कर रहे हैं। ही इज फोल्डिंग द 7-9 ऑफ हेड्स अप, जो काफी फोल्ड नहीं होना चाहिए, स्पेशली फॉर दिस डीप अ गेम। आपको हेड्स अप में हैंड्स तो खेलने ही पड़ेंगे, वो हमेशा यही बात होती है। डिसेंट फ्लॉप फॉर सिद्धार्थ, लिम्प्ड पॉट था, बट if one day he doesn't want to hit the 9 because his opponent would make a straight, but let's see if he wants to just check call over here. काफी draw heavy board है, check raise करेंगे तो उनका opponent अगर कोई चीजें करेंगे तो यहाँ पर टॉप पेयर की सिचुएशन वही होने वाली है। He does go for the check raise. He's at least blocking a 1 heart so that his opponent cannot shove a hand which would have the 9 of hearts at least. Honey calls with his gut shot, makes a pair. ये पेयर सिद्धार्थ को ओपन एंडर देता है। सिद्धार्थ ने एग्रेशन तो ले लिया इस हैंड में, तो अब इस टर्न पे भी ज्यादा कनेक्शंस बने नहीं है। हैंड्स लाइक 8-10 इम्प्रूव आई गेस। क्वीन 9 को वो खुद ही ब्लॉक कर रहे हैं, क्वीन 9-7-9 टाइप के हैंड को। अब जब हनी ने टर्न पे फ्लॉप पे गट शॉट्स पे कॉल किया, टर्न पेयर लगाया, पर ये पेयर कितनी बार गुड होने वाला है वो भी इन्हें थोड़ा सोचना पड़ेगा। और हम जानते हैं कि अगर 2 पेयर लगाए तब तो वो बहुत महंगा पड़ने वाला है। So he just called the check raise once in position and let it go. अब बताइए श्री, सिद्धार्थ के पास आ गई है चिप लीड, मिलियन तक पहुंच गए थे, 10 लाख तक हनी पहुंच गए थे, एंड काफी चीजें चेंज हो गई हैं। सो आई थिंक द हेड्स अप चैंपियन माइट हैव एन एज ओवर हियर। आपको क्या लग रहा है? I think from the play that we've seen so far, may seem so. But here's the thing about Honey, from what I've seen in the past, JD, he's quite fearless. He doesn't, doesn't mind putting the opponent in the cage, or doesn't mind making the call when his tournament is on the line. You know, in situations where many people will fold, you'll see him making a call. So there was one hand which he misplayed for sure in this heads-up battle so far, where he had bottom pair and Siddharth had flop trips. But apart from that, there's still nothing in it. The confidence, though, will be with Siddharth, because he knows he's really was down to pretty much was down to giving up a 1-4 chip lead, and then has now clawed his way back after making some good calls and making some good plays. So
the momentum and the confidence probably is with Siddharth in this particular moment, but still it could go either way. And here we see an interesting hand एंड play out. इस हैंड में हुआ ये कि हनी 3x रेज करके आए थे, फ्लॉप चेक कॉल किया सिद्धार्थ ने, टर्न चेक चेक गया एंड सिद्धार्थ हैज मेड ट्रिप्स ऑन द रिवर. तो हनी के पास सिर्फ क्वीन हाई बचा है रिवर में. अब सिद्धार्थ का बस वही बात आ रही है, वो किस हैंड को टारगेट करना चाह रहे हैं, जैक एक्स को, 9x को. तो कितनी सिद्धार्थ के दिमाग में तो यही सोचने में आ रहा है उन्हें कि मेरे ट्रिप से मैं वैल्यू लूं तो कितनी लूं. पर उनके ओपोनेंट के पास ऐसा अच्छा हैंड तो नहीं है कॉल ऑफ के लिए. क्वीन हाई मेकिंग दैट क्विक फोल्ड. Yeah, Siddharth going with the overbet on that river gets the job done. What I've seen with Honey is like his bad hands, like the queen 6 off, queen 4 off. He's been raising 3x, and then all of a sudden with this ace 5 off, like ace 3 off, he's just limping. So I'm a bit confused on that part. Yeah, if he's probably limping in an attempt to re-raise when his opponent raised, then it's probably understandable at some level. But he's been mostly limp, just calling off raises. So yeah, that's a good point. Good point you make there, JD. Let's see, maybe he readjusts his strategy at some point in this one. क्योंकि वही वाला हैंड जहाँ सिद्धार्थ ने किंग क्वीन हाई कॉल किया था, that went limp, raised by Siddharth and only a call by Honey. And we've not seen him actually have like huge hands also on the button, जिससे मतलब वो limp raising के hand जो बहुत ही बड़े वाले, अभी तक ऐसा collision hand तो दोनों का कुछ आया नहीं है. True, that's true. Ace 5 versus King Queen was the pretty much premium versus premium heads up they've had. Like one of the guys gets a hand, other one gets like 9-4 off. That's what's happening. So yeah, the chips are being put in the pot, but ऐसा नहीं है कि दोनों के पास both are trying to win pots with let's say marginal holdings. ऐसे किसी के पास heads up poker में होता यही है, आप hand का इंतजार करते रह गए तो तब तक आप blind out ही हो जाएंगे. Yeah, these guys right now trying to grind each other out with these stack sizes in play. Yeah, Honey comes in with a raise, JD, 10-4 suited. Yep, Siddharth with the ace 6 off. देख ही चुके हैं वो काफी बार, ये 3x raises हो रहे हैं. थोड़ा स्ट्रीम में जाके भी देखेंगे तो फिर अब ये जो एस 6 ऑफ है उनका फोल्ड की जगह मेरे सबसे 3-bet में कन्वर्ट होने वाला है थोड़ी देर में. Siddharth maintaining his raise sizings all the while. Has the jack 6 off suited against the king 3 suited. रेजिंग इट, और थोड़ा बड़ा रेज दोनों ही कर रहे हैं क्योंकि डीप स्टैक पोकर है. जैसे हम बात कर रहे थे, इतना डीप आप पोकर टूर्नामेंट में तो कम ही खेलने को मिलता है आपको हेड्स अप में, पर इस सिचुएशन में दोनों पहुंचे हैं. एंड थोड़ा पॉट प्री फ्लॉप मिन रेज से ऊपर चल रहा है. हनी इज गोइंग विद द 3x और द लिम्प स्ट्रेटजी. Yeah, Honey's got a 3 pair on that board. Don't see him going don't see him going anywhere soon. Question is, how does he decide to play this? He comes in with a raise, and Siddharth will quickly find a fold. Yep, I think रेनबो बोर्ड जैसे सिद्धार्थ ने वो छोटा सा चेक रेज किया था ना, आप बॉटम पेयर के साथ भी वही कर सकते हो, ट्रिप्स के साथ भी वही कर सकते हो. तो इतने बड़े रेज नॉट, अगर आप चाहते हो आपका ओपोनेंट फ्लोट करे हैंड्स, कौन से हैंड्स हो गए जिनको आप कभी कभी अब रिवर्स डोमिनेट कर चुके हो, तो यू माइट बी फाइन विद दैट. फिर से रेज देखा हमने एस जैक का, 10-5 ऑफ सूट डिफेंड हुआ है. मेरी कट ऑफ बॉर्डर शायद 10-5 ऑफ सूट पे आ जाती. It's tough hand to play out of position against a guy who will be pretty aggressive. Heads up में मैं 10-6 ऑफ सूट डिफेंड करता हूँ श्री, वो 10-6 की बात मैं 900 टेबल पे अटकता हूँ, पर वो भी देखने को हमें मिला. एंड 3x ओपन बाय हनी अगेन विद द क्वीन 10 टेकिंग इट डाउन. लेकिन सिद्धार्थ ने अब थोड़ी सी चिप लीड तो ले ली है एंड पूरा फोकस मोड में खेल रहे हैं दोनों प्लेयर. और देख रहे हैं आप वो साइड में दोनों स्ट्रीम भी देख रहे हैं क्योंकि स्क्रीन पे तो नजर अपनी जा ही रही है और रिप्लेस भी देखे जा रहे हैं.
Yeah, both players pretty zoned in right now, JD. They've been locked in heads up battle for a while now in this session. All the other players busting out in pretty quick manner. Leaves us with these two. They battle it out for that 4,800 points up top and 3,300 for the runner-up. Yep, and सिद्धार्थ बोल रहे होंगे अरे मेरा वो जैक्स होल्ड हो जाते तो तुम तो पहले ही बाहर हो जाते so that situation is also in his head maybe where he's like I could have busted you so early you wouldn't have even made it to heads up अब heads up खेलने आए हो तो चलो खेलते हैं and he comes with a limp this time around with the king 3 on the button. Darth with the 6-9 suited. Out of position pot बड़ा करके खेल रहे हैं सैंड के साथ. Honey limp folds. Interesting. King highs, all these queen highs, ace highs are pretty big premium holdings in heads up. And आप कितना 40-40 बिग ब्लाइंड डीप खेल रहे हो तो थोड़ा तो आपको खेलने पड़ेंगे वो हैंड्स. मेरे हिसाब से हनी काफी ज्यादा एमटीटीज खेलते हैं. हेड्स अप थोड़ा कम एक्सपीरियंस हो सकता है बट 3 साल मुंबई ने रखा है भाई, किसी चीज के लिए तो रखा होगा. मस्ट हैव लव्ड हिज 3-bet shove game or seen him play, run deep in tournaments, get into the money. So he's got all the experience with the Mumbai team and the trust as well if they are bringing him back, and we'll hopefully get to see that soon enough. हमारा तो सैंपल साइज कितना कम है. हम 10 हैंड्स देख लेंगे, एक हैंड में पसंद नहीं आएगा and we'll interpret a position in our head, but that's not the case. This time he has to bluff a hand exactly 9 high. Unfortunate, whereas opponent has a hand which he can call off with. सिद्धार्थ के पास 3-6. देखिए सिद्धार्थ ने, मैंने देखा है उन्हें 3-4 ऑफ सूट ओपन करते हुए देखा है, तो सिद्धार्थ की रेंज 100% हो चुकी है बटन ओपन करने की, और ये जल्दी जल्दी हनी को पिकअप करना पड़ेगा एंड अपने हैंड्स 3-bet करने पड़ेंगे कुछ. सिद्धार्थ को आप इतना लिबरली हर एक बटन रेज के लिए आने के नहीं दे सकते हैं, क्योंकि अब सिद्धार्थ खेल रहा है बड़े पॉट्स इन पोजीशन हमेशा, और आप कभी लिम्प करके खेल रहे हैं और कभी आप 3x करके खेल रहे हैं. जो सिद्धार्थ आपके अगेंस्ट 3x भी बहुत फोल्ड कर रहा है, that is working for you where he's folding a lot. He's folded ace-6 to your 3x, but Siddharth's getting to play all the big pots on his button and you're either winning the big blinds or you play a really small pot. तो आप पोजीशन में बड़े पॉट्स खेलना चाहते हो तो वो हनी देखेंगे ही एक्शन में. देखिए जैक टू सिद्धार्थ, पत्ते मैटर ही नहीं कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पर. Right, and Honey not playing back till now. Siddharth's got a 2-1 chip lead, a little more than 2-1 chip lead. It's not the story a few moments back. Now Honey's picked up a pocket pair. His pocket fours. His hand continues to limp. Siddharth decides to check the big blind for free. No one's loving this board, but most likely Honey gets to take this. Limp pot है. सिद्धार्थ out of his way जाएंगे क्या यहाँ पर bluff करने? नहीं, just gives the Honey a small one. Yeah, Honey will be quite happy to take it down then and there. No one loving that board, JD. Yep. There comes the raise again. 5-4 off. आप अपना ace-7 अब कैसे खेलना चाहते हैं? He decides to just call. अगर 7 लगाया तो सिद्धार्थ तो straight लगा देंगे, पर मुझे उसकी जरूरत लग नहीं रही है. Range bet करने वाले हैं. काफी रेनबो बोर्ड है, कभी 5 हाई शोडाउन पे तो ले जाने का मन नहीं है. एंड देयर आर सो मेनी ऑटो फोल्ड्स व्हिच हिज ओपोनेंट हैज, लाइक जैक 10, क्वीन 5 सूटेड, ऑल दीस कॉम्बोज. Honey makes the right call with his ace-7 and look at that, pairs up and his opponent makes the straight. तो बोर्ड उनके लिए, रेंज के लिए थोड़ा बहुत ठीक हुआ है उनके लिए, पर एक्चुअल उनके ओपोनेंट ने तो pretty much वहाँ पर एक तरह से बेस्ट हैंड बना लिया है. सिर्फ 2 स्ट्रेट्स उन्हें हरा रहे हैं, एक 9-10 और एक 5-9. एंड just going at it is Siddharth bets again, bets for close to 60% sizing. थोड़ा कम 55. Honey makes the call again. Pretty decent card which saves him, I think.
Now the one card straight gets there. I was just hoping no ace, no 7. Otherwise, that would have been the end of it. सिद्धार्थ को obviously ये कार्ड इतना अच्छा नहीं लग रहा है. He just was thinking मेरा opponent अगर मुझे 8 pair से call कर रहा है, give him the 2 pair which he needs. And he'll tank for a while, but trust me, there is nothing except betting for him. अब वही बात है, यहाँ पर वो ओवर शव करना चाहते हैं या वैल्यू बेट करना चाहते हैं, या ये चंकी बेट है काफ़ी, 60% 66% के आसपास बेट है. And right now, Honey, to be honest, beats nothing. Like a hand like 5-6 also got there, which turned an open ender with a pair. So there is not much which he beats on this river. Right, and he So he does decide to fold. does decide to fold. Another big hand going in the way of the MPL going nuts. सिद्धार्थ क्वालिफायर की तरह आए, लेकिन काफी अच्छा खेलते हैं. Definitely. Yeah, Siddharth's making his debut in this league, JD. It's the first time he's taking part in the PSL. On the other hand, Honey has been there all through. I think Siddharth had seen the first few seasons and he was like, now I want to get in. So what's the easiest way to get in? Play the hashtag qualifiers or the other online qualifiers and make your way on your own. And if you were to end up in the top of the ranks, you could choose exactly the team where you wanted to go. Right now, he's betting his full house and getting called by the ace highs. And it's looking like a river which is only going one way for now, Shri. Yeah, right now, all the momentum with Siddharth Mundada of the MPL going nuts. Honey Bichlani. चीजें चेंज हो सकती हैं यहाँ पर इस तरह. Just And a like pocket this. 52 all in unless a 3 or heart rolls off. It's a chop pot. Unfortunate, Honey. Wow, what a run out. Those both ace chopping with the king on the board and the 10s pairing up. But Siddharth definitely fortunate that he doesn't double up Honey in that spot. Yeah, unfortunate for Honey. Very unfortunate. Honey. चीजें हो सकते हैं. That's what you say. And we just had one of those things. In the end, the 10 pairing on the river to give it to. Yeah, result in Siddharth a picked up a chopper. flush draw, man. The 3-high flush draw on the turn, a heart on the river could have ended it, I think. But Honey definitely would be like, I was such a huge favorite getting in there. Right, right. And on we go. Now there's a commanding chip lead in play, as you can see, viewers. Pocket 52 all in by Honey with his ace 7 suited. सिद्धार्थ अब थोड़ा ग्राइंड मोड में करने वाले हैं. मुझे लग रहा है 15 बिग ब्लाइंड है उनके ओपोनेंट के पास एंड वो देख रहे हैं उनके ओपोनेंट जिस तरह खेल रहे हैं, तो अब तो बगल में अपनी स्क्रीन में हैंड्स भी देख ही रहे हैं. तो ही इज गोना डिसाइड डिक्टेट हाउ ही वांट्स टू प्ले. स्मॉल बॉल पोकर खेलने आ रहे हैं, अब बटन लिम्प स्ट्रेटजी पे आ गए हैं. Honey is more than happy because he has the 9 deuce suited. And ये small ball जो मैं बोल रहा हूँ, इससे फायदा ये मिलता है, you get to bet most of the boards and your opponent is not connecting out of position, is short. काफी अपनी chips invest करनी पड़ेंगी आने के लिए भी. And you can just bet less than 1% of your pot also in certain situations, or maybe 1% because Siddharth has more than 1 million chips and all he has to do is bet 16k most of the times. Right, limp pot playing out here. Neither player with anything. Honey's got queen high. Siddharth's got 5. Queen high is still the best hand. Siddharth's definitely going for every pot over there. And queen high. Interesting fold by Honey. I would have preferred if he called. His opponent just gives up a lot also on the river. Right. Because Honey's range is decent enough sometimes. सिद्धार्थ के पास खुद वो किंग और जैक के कॉम्बोज कितने होंगे वही बात है. And Siddharth becoming the juggernaut now has close to 1:5.5 chip lead. Yeah, he's been going on a tear in these last few hands. तो हम क्या सीख रहे हैं श्री इसमें? सिद्धार्थ के साथ हेड्स अप गए
तो सारे हैंड्स वो ओपन करते हैं तो बेट तो करना शुरू करते हैं अपने हैंड्स। किंग 10 देखे तो उन्हें किंग्स की तरह समझे सिद्धार्थ के अगेंस्ट अपनी बिग ब्लाइंड पे आप। we've seen him open a lot of the hands. Look at सिद्धार्थ मुंडा अब अपने जब वो रेंजेस लिम्प करके खेल रहे हैं सारी, तो अपना अच्छा खासा हैंड एस 9 सूटेड भी लिम्प करके खेलेंगे एंड टॉप पेयर लगाए हैं। Right, and Honey's got absolutely nothing on this board. I wonder if he's going to make a bet here, JD. For his sake, I hope he check folds. It's tough to represent this board when you've not done anything with your short stack pre-flop. Maybe he's disconnected itself. But he's definitely thinking what we can see from the video feed. दोनों इतना हिल भी नहीं रहे हैं कि लगे भी कि जिंदा है दोनों। I'm just seeing the video feed and both of them having their hand on their face. Poker face तो ऐसा है इन लोगों का, पता ही नहीं चल रहा है frozen है screen या क्या है। Yeah, Honey timing out, but still was back to fold. And we're going to go on a short break here. It's an intense heads-up battle. We're down to 2 players. Siddharth Mundada of the MPL Going Nuts and Honey Bijlani of the MPL Mumbai Anchors. Viewers and JD, don't go anywhere. See you guys on the other side of this short break. भैया 1 किलो आलू। अब खाली टाइम में कुछ हट के करो। पॉकेट 52 पे पोकर खेलो और असली विनर बनो। इस गेम में वित्तीय जोखिम का तत्व शामिल है और इसकी लत लग सकती है। कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं आप ही का अर्जुन सिंह एंड मैं क्या करने आया हूं, आपको एक क्विक अपडेट देने आया हूं ऑन पॉकेट 52 पोकर स्पोर्ट्स लीग सीजन 3 वर्चुअल के पहले किक ऑफ इवेंट के बारे में। यार यहाँ पे हमें देखने मिला मतलब मजेदार कांटे की टक्कर। मतलब फ्रॉम द वास्ट पूल ऑफ 64 प्लेयर जो फाइनल टेबल्स तक पहुंचे वो थे एमपीएल मुंबई एंकर्स के प्रो प्लेयर अक्षय नासा विद अ चिप स्टैक ऑफ 2,16,153। नेक्स्ट इन वाज चिप काउंट के साथ क्या रे भाई डेक्कन एसेस के कप्तान कुणाल पाटनी विद 1,84,214 चिप्स। उनके बाद थे एमपीएल मुंबई एंकर से उन्हीं के वाइल्ड कार्ड कुशाग्रा मेहता जो लेके बैठे थे 1,81,755 चिप्स। द नेक्स्ट प्लेयर वाज एमपीएल गोवन नट्स के प्रो प्लेयर जोही साहा जिनकी हमने उम्दा परफॉर्मेंस तो पहले देखी थी, लेकिन यहाँ पे 76,176 चिप्स के साथ वो विराजमान थे। उनके बाद थे चेन्नई ट्रूपर्स के ऑनलाइन क्वालिफायर सागर पटनायक जो बैठे थे 70,150 चिप्स के साथ। उसके बाद गुजरात फैल्कन्स के वाइल्ड कार्ड पवन बंसल बैठे थे 56,220 चिप्स के साथ। और आखिरी कुर्सी यानी कि 8th कुर्सी पे विराजमान थे कौन, गुजरात फैल्कन के राम कक्कड़ जो कि बैठे थे 24,800 चिप्स के साथ। वेल, इस इवेंट में 10th प्लेस तक पॉइंट्स थे। तो मैं आपको बता दूं कि डेक्कन एसेस के धीरेन्द्र कुमार बबल्ड एंड बस्टेड एट द 11th प्लेस। एमपीएल मुंबई एंकर्स के हनी बिजलानी 10th आया और उन्होंने अपनी टीम के लिए 100 पॉइंट्स कमाए। बेंगलुरु लेजेंड्स के अर्श ग्रोवर केम 9th और उन्होंने अपनी टीम के लिए पूरे के पूरे 300 पॉइंट्स कमाए। और अपने शॉर्ट स्टैक के साथ डटे रहने के बावजूद गुजरात फैल्कन्स के राम कक्कड़ ही बस्टेड आउट एट द 8th प्लेस और उन्होंने अपनी टीम के लिए पूरे 500 पॉइंट्स गैदर किए। 7th प्लेस में आए एमपीएल गोवा नट्स के जोई साहा और उन्होंने 600 पॉइंट्स गोवा को पूरे के पूरे दे दिए। चेन्नई ट्रूपर्स के सागर पटनायक फिनिश्ड एट द 6th पोजीशन एंड वो ले गए अपनी टीम के लिए 900 पॉइंट्स। एमपीएल मुंबई एंकर्स के कुशाग्रा मेहता 5वीं प्लेस पे बस्ट हुए एंड वो ले गए पूरे 1000 पॉइंट्स।
पोकर दंगल कोलकाता किंग्स के करण ठक्कर अपने शॉट स्टैक के साथ भी फाइनल टेबल पे कांटे की टक्कर देते हुए लेके गए फोर्थ पोजीशन पे 1400 पॉइंट्स। ऑल्दो गुजरात फैल्कन्स के पवन भंसल इस फाइनल टेबल में आए सिर्फ 56,220 चिप्स के साथ, लेकिन थर्ड पोजीशन पे वो अपनी टीम के लिए ले गए पूरे के पूरे 2100 पॉइंट्स। इसके बाद डेक्कन एसिस के कप्तान कुणाल पटनी और एमपीएल मुंबई एंकर्स के प्रो प्लेयर अक्षय नासा के बीच हुई एक घमासान टग ऑफ वॉर, जो कन्वर्ट हुआ कहां पे, मैं आपको बता देता हूं। ये कन्वर्ट हुआ वहां पर जहां अक्षय नासा एमपीएल मुंबई एंकर्स की तरफ से सेकंड आए और लेके गए 3,300 पॉइंट्स अपने लिए। एंड ऑब्वियसली नो पॉइंट्स फॉर गेसिंग, डेक्कन एसिस के पंक्चुअल कप्तान कुणाल पटनी लेके गए पूरे के पूरे 4,800 पॉइंट्स। यार इससे बेहतर किक ऑफ तो फुटबॉल में भी नहीं होता है यार। पॉकेट 52 पोकर स्पोर्ट्स लीग सीजन 3 वर्चुअल में फिलहाल इस किक ऑफ इवेंट से इतनी इंफॉर्मेशन आई है, लेकिन आगे और भी मैचेस होंगे और भी इंफॉर्मेशन आएगी, और वो कौन लाएगा? आप ही का अर्जुन ऑन पॉकेट 52 पोकर स्पोर्ट्स लीग सीजन 3 वर्चुअल। तब तक के लिए क्या बोलते हैं उसको, हाँ बाय बाय। क्या हुआ, चौंक गए? पॉकेट 52 पे पहले डिपॉजिट पे जब मिलेगा 5600 तक का बोनस तो हर कोई चौंकेगा। इस गेम में वित्तीय जोखिम का तत्व शामिल है और इसकी लत लग सकती है। कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें। You know, work from home is nothing but home का सारा वर्क। और झाड़ू अब जब भी होगा काम ओवर, खेलूंगा मैं एमपीएल पे पोकर, क्योंकि यहाँ क्या। Welcome back, viewers. We're locked in an intense heads-up battle. We saw Siddharth Mundada give up a 1-4 chip lead for a large part of that battle, but then he's clawed his way back and he himself has a massive chip lead over Honey Bijlani. And JD is with us. JD, Siddharth's been pulling off all the right moves in the last few moments, you know, for most parts of that session there. Yeah, it's been right for him from being chip leader to the short one, really short against him, and then again now he's in the spot where he has all the chips, and Honey Bijlani does a pocket 52 all in moment with his ace queen. Siddharth now not having a hand he can call off that with, and look at this, when Siddharth shoving, Honey himself is not getting any hands at all. So अब hand groupings भी थोड़ी play करेंगी 10 big blinds में। सबको ही पता है इन दोनों को कि calling और shoving ranges क्या है। We need hands to collide, and if the chip leader keeps on getting big hands like this, we see the pocket 52 all in, and a call flush draw for Bijlani, hits his flush, needs to fade the spade, and fade he does. A flush for Honey Bijlani gets him the double up. Wow, that was interesting because Siddharth himself had one of the spades in the jack of spades, but getting there is Honey Bijlani and he doubles up, much needed for him. Let's see how he proceeds from here. You saw the little a nice 3-bet shove by Honey Bijlani. I like it. Now he's understanding that Siddharth's opening all of his buttons. All of a sudden, with 20 big blinds, he's ripping in the jack 10 off. I like it. Yeah. You saw Siddharth's look when the chips was being slided away from him. He's like, five suited. Yeah, Honey's definitely gone and seen the stream. He knows what Siddharth's up to, and Siddharth too has gone and seen what Honey's been up to. And look at this, with just one hand, him facing the 3-bet shove, he just changed his strategy. He's now coming in with limps instead of previously he was raising 3-4 offsuit. Now he's coming in with the limp with his 10-9 off. Wants to say play some post flop hands. Honey Bijlani was dominated pre-flop, but now instead reverse dominates by flopping the 4. Giving it a tank. He's thinking what he wants to do. That's for sure. Finally, he's going to get auto checked, I think.
Yep. And Siddharth, जिनके पास बैकडोर इक्विटी है, 2 ओवर कार्ड्स हैं, goes for the min bet. हनी चेक कॉल कर रहे हैं. And the turn trips, a good card for Honey. Quickly checks it to Siddharth, gives him the rope again. Bluff करने का मन है आपको तो करिए. And Siddharth's not having any of it. Finally, the river is 6. 5-7 and 3-5 get there. Those are the only 2 hands. Somehow, if someone has 6s in a limp pot, that is unlikely. And pot bet by Honey and a pretty quick fold by Siddharth with his 10-high. Yeah, pretty quick fold indeed. Honey's crept back into this one. He's cut the chip lead. He's now facing just a little under 2.5:1 chip lead. And on we go. And फिर से limp pot. दोनों अब थोड़ा small ball खेलना चाह रहे हैं. Coming in with a bet on this board is Honey and Siddharth के against ये pot भी ले गए. So it's been a good break for him. Like he took the break, got his composure back, understood what his shoving ranges were, shoved a hand which he thinks he needs to, ran into a massive one, but yeah, made the flush, got out of that jail, and now is playing pretty much 25 big blinds deep, heads up poker. Yeah, I don't mind that shove to JD with 9-5 suited. Like you mentioned in heads up, the shoving range is so different from if you were playing a full ring. Just so happened that Siddharth had a hand there. What ultimately happened was that Honey got there with his 9-5 suited, and as a result, he's still alive and in this to take maximum points for his team. Folding the 4-5 on the button. Yeah, I think Honey's comeback pretty good. Like he understood वो Jack 10 offsuit की जब मैंने shove देखी against Siddharth's button raise. So I was like, now he's come in with a different frame of mind. Maybe he's talked to his coaches in the break. We saw the players go out of the screen and Honey के हाथ में पहले phone दिख रहा था जब वो break में जा रहे थे and वापस आते हुए फिर उन्होंने काटा phone जब खेलना शुरू करे. So yeah, and he rips his 8-9 offsuit. Right. Yeah, definitely. A little wild, but all right, still, it's okay. He's definitely coming with a plan, though, Honey. You know, he's like, you're not going to steal any more pots from me. If I've got some sort of a holding, I'm going to set the tone in these pots, and let's see how it goes from there. Yep. He's thinking about this one as well, but वही बात है, प्रीफा आपने रेज नहीं किया है तो आप यहाँ ज़्यादा रिप्रेजेंट कर नहीं सकते इस बोर्ड पे. So Siddharth still gets to take that pot down. Honey's getting pretty bad cards right now. Deuce 8. Yeah, and Siddharth वापस 10 लाख पे पहुंच गए. Yeah, Honey's not picked up. He's sort of a strong holding, you can say, but he has picked up some holdings. Here is another one of those. Ace 5 off, and he piles it in. Gets the job done. Siddharth, let's go. And it also looks doesn't like want to play out of position also, so he's just like, all right, if you have better, I'm going to go with my hand. And Siddharth limping the 7s. अपनी रेंज के साथ वो काफी लिम्प कर रहे हैं तो 7s भी उसमें आएंगे ही. एंड ऑलवेज गोना बी बेटिंग दीज बोर्ड्स. एंड देखो, आप जानते ही हो, जैसे बात कर रहे थे, इट्स टफ टू कनेक्ट टू बोर्ड्स इन टेक्सास होल्डम. हेड्स अप में पेयर लगाना बहुत मुश्किल है. दैट इज व्हाई you see like huge hands played with like one pair, ace highs, king highs as well. So it's very rare where you see like both of them are actually having holdings. ये 7 deuce versus 7-6 की लड़ाई देखिए. And सिद्धार्थ वो भी नहीं छोड़ना चाहते हैं बटन पे. Look at him go. Honey, come on, the 3 bet, deuce 6 off. Do it. Would be a statement if you can do it and show it as well. Honey's in the tank. He is in the tank. Polarized पूरा, या तो nuts या here, deuce 6 off. He's been tanking a decent bit sometimes. Maybe he's thinking of his strategy in the next hand, to be honest. He's calculating how many big bets he has.
Yeah, very possible. JD is probably thinking about something in the future that's going to happen in this heads-up battle. maybe even wants to slow down the action. Like क्या है अगर आपको लगता है आपका ओपोनेंट आपको आउटप्ले कर रहा है, he has the more edge, you want to play high variance and short stack. High variance and short stack में edges कम होते रहेंगे. जितना आप लो वेरिएंस एंड डीप स्टैक खेलेंगे, जिस प्लेयर के पास ज्यादा एक्सपीरियंस है, he'll dominate the action much more. So maybe that's his play as well. He wants it to be really more short, where he just has to play all in fold. But he's close to 20 big blinds, which would be in that range also. थोड़ा और छोटा होना चाहते हैं क्या? क्योंकि सिद्धार्थ का स्टैक तो अभी छोटा होने ही नहीं वाला है. He has huge amount of chips. He has more than 60 big blinds. But Honey is definitely trying to go slow the action, speed of the action for sure. We've seen the Sharad do it as well in one of the secondary final tables as well as the final tables. The tank. ये जो tank वाली theory थी, ये डग पोल्क और डायलन नेग्रानो ने अपने heads up game में भी लगाई थी. And उसकी वजह से जो उनके मॉडरेटर थे, एक तरह से मॉडरेटर नहीं, जो वो पर्सन थे जिन पे अगर कोई इशू होता उस चैलेंज में उन पे जाना पड़ता, जो फिल गैलफोर्ड, अ वेरी रिनाउंड नेम इन द पोकर कम्युनिटी, उन पे गए. एंड डग पोल वाज नॉट हैप्पी विद द टैंक्स. यहाँ देख रहे हैं दोनों के पास पेयर्स लगे हैं. हनी बिजलानी विद मिडिल पेयर, सिद्धार्थ विद टॉप पेयर. हनी बिजलानी डज कॉल, टर्न इज अ 6. दोनों के हैंड में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं. सिद्धार्थ का किकर unlikely will get played on the river क्योंकि there are more cards bigger than 5 that can show up. He just doesn't want to see a 10 or an 8 on the river and he'll be more than happy with that. टर्न पे देखते हैं सिद्धार्थ क्या साइजिंग चाहते हैं. मुझे लग रहा है 40s ही बोलने वाला था मैं. So 44,000 and Honey still has a decent big hand. His opponent can pick up flush draws on the turn, even semi bluff some hands. Still have hands like Queen Jack and all those sorts. So a good enough call on the turn. अब बात ये आएगी क्या सिद्धार्थ फुल वैल्यू के लिए जाएंगे इस रिवर पे हनी के अगेंस्ट. एंड साइजिंग क्या होगी? या तो बहुत छोटी जिससे 10 से कॉल चाहते हैं, या अपने हैंड को ब्लफ की तरह दिखाना चाहते हैं और 10 से कॉल चाहते हैं. दोनों में से एक चीज आने वाली है ऐसे लग रहा है. हाँ, सिद्धार्थ सीधे हाफ पॉट. ठीक है, gets the call, chips his opponent down. Top pair is good. Top pair is good, gets pretty much the max value he could from that particular hand. And Honey Bijlani is now in the sub 10 big blind zone, JD. हाँ, ये पॉकेट 52 ऑल इन तो आने वाला है बहुत ही जल्दी. एंड सिद्धार्थ कहीं इस हैंड से भी बुला दें. And he does. He's like 9-4 suited. Let's go. Pocket 52 all in and a pickup for Siddharth again. Oh, here we go. Oh, this is just not fair. This is just not fair. Pocket 52 all in and a call. 9 pair lagaya hai. Honey ne needs a king or a 9 again. Aces for Siddharth and easiest way to do it, huh? Yeah, one of the ways to do it. Pick up aces when you're the chip leader, the opponent is short, he gets it in with king 9 suited and you give him the bad news. And that being said, maximum points 4,800 to be precise for Siddharth Mundada and the MPL Going Nuts, who are at the bottom of the table, who started at the day at the bottom of the table, JD. And in second place, a very, very good effort by Honey Bijlani. Like you said, someone who's got enough games so that he comes back every season for this Mumbai team. Wow, what a great deep stack event we've seen today, JD. What would you like to say about this MTT we saw today? Yeah, it was pretty intense from the start. Sabke paas chips thi, everyone was making. We saw a lot of plays being made. In the first table we had was a stellar star-studded field. And वही होना था. आप प्रीमियर पूरी लीग खेल रहे हैं इंडिया की, एक पॉकेट 52 पोकर स्पोर्ट्स लीग, सारे इंडिया के सारे बड़े बड़े प्लेयर्स खेल रहे हैं. So you expect a good amount of actions. The final table was pretty much fitted with a lot of these big names, and
थोड़े जिन प्लेयर्स को मैं देखना चाहता था इस लीग में, माय गुड फ्रेंड्स नील एंड आलोक, दे वर इन द मिक्स, अभिनव अय्यर एज वेल, बट he makes final tables every day, so nothing new for him. Would be a little disappointed with that auto fold of the ace king. Right. But except that he definitely made points for his team, and 3 goans showing on the final table, one of them winning it. What more does Goa want? Absolutely. What a story it could be for the MPL Go Nuts if they can turn it around from here. And that being said, viewers, it's a wrap from us tonight. We will bring you our next stream on Saturday. That will be the main event, which is also an MTT, and loads of points up for grabs in that one. JD, thanks so much for being with us and giving us your insights as always. Surely, Shri. That was fun as well. Yeah, and viewers, to you, always a pleasure calling the action out for you. And see you on our next stream. Take care. This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly and at your own risk. Participation according to state laws.